Jai Bharat, Suraj Singh again. Sorry, last video was disturbed, so I have to come back again. It happens, I can't help it. I was talking about Constitution of India of this country. Very important talk regarding what we are. It's, you can say, a type of analysis of Constitution of this country. It's very important for us to understand first we are. It's not simply say we people of this country and preambles we talk and we stop this. Preamble is one thing. Preamble. Very important power. We people of India, we people of Bharat, India, having solemnly resolved to constitute this country into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its people justice, equality, liberty in various fields as described on preamble, and to let enjoy everybody full dignity, brotherhood, fraternity, and this was approved on 26 November 1949 and fully effected on 26 January 1950, which you can say is called our soul of this constitution, foundation of this constitution, and it's for everybody, it's not for one man or other one. Whoever is a member of this country since 1950 and onwards till now, whosoever is, he is given a kind of greeting that you own this constitution, you own this country, you are a part of public, you are part of people, you are part of this country, and this is, you can say, a kind of charter everybody is allowed. This is a charter, self-charter. It's not charter written by king, it's not charter written by something. Collective people of this country, a body, institution, super institution of this country has given itself, considering itself as a republican king, to itself, considering itself the public subjects, citizens of this country. I am citizen, you are citizen, everybody is citizen. I am not a part of public. In case you can say a king or a slave. No, I am not. I am a citizen. This point every person has to understand. We are not part of Parja. We are not ruled by Raja. We are not ruled by Nawab. We are not ruled by Amir. And we are not ruled by Sultan. We are ruled by Constitution of our country, Bharat, India, which was approved in 1949 and commissioned and fully, you can say, enforced in 1950, Bharat ka Samvidhan, which is still in force. And everybody who is a member of this country is designated citizen by power of this constitution. We are not part of Praja, we are not under king, we are not slave, we are not masters. We are having ownership of this country, Bharat. We are not slaves. Citizen has to be understood as citizen, not a beggar. Citizen means you have constitutional rights and privileges and obligations and duties. We have to take this into our mind, keep this into our mind, and then understand your power. You are Bharat, you are India, you are not something else. You are people of this country, I am people of this country, I am citizen of this country, and this is my country. Come what may, let somebody speak whatever may speak, may speak. I am honored in capacity as citizen of this country. If there is something happens bad, it happens bad with me and you. If there something happens good, it happens good for you and for me. It's like that. It is my home on this earth, on this planet. Among all others' homes or all other nations, this is my belonging nation on earth. This is my, you can say, earthly station, earthly journey station. Means we have to think whatever way we can think, but we have to value ourselves as Bharat Vasi, Indian citizen, responsible for this country and giving something to this country
is obligation of everyone. In our constitution is not a book alone, it's power. It demands something of every citizen, and every citizen has to draw something from this. We have to draw from this our rights, our privileges, and we have to give back our duties to our land. Just singing Janagan Man is not an answer, or chanting Vandematram is not an answer. Answer is sacrifices, responsibilities, duties that we have to conduct, we have to do for our land, our nation. And if we cannot do this, we are a burden on this nation. We are cruel on with this nation. We want to get something, we don't want to give back. That is not acceptable. So we have to take it that way. Constitution is not for namesake. It has to be understood. It's not a book to read. It has to be read first. It has to be understood by analysis. It has to be understood in the spirit of letters. It's not letters that we have to read. We have to read what it speaks in its all. That is important. Again, I am saying I'm not expert of constitution, but there is no need to be expert. Are you expert if you read ABCD, or when you learn CAT, CAT, RAT, RAT? You are not expert, but you learn it. So you can say that you are learning it. I want to learn and understand. I want to read and learn. Let us say that way. I am child to see this constitution. If you feel that way, you will understand it. And if you think you are expert of constitution, expert of law, you can never understand this. Because first preliminary study is required, then primary study is required. You have to study it as a blank mind, empty mind, and you fill your mind with this knowledge. Then you coordinate various points of that knowledge and then understand. Our constitution says we people. Yes, we people. We were 30 crores in that time, maybe now we are 130 crores. It doesn't make a difference. Everybody is greeted by this constitution. This constitution greets everybody, every citizen who joins this country at time of birth and who leaves this country at time of death. Everybody is greeted by this constitution for its entire journey of life, and this constitution is there to help everybody, provided we support this constitution, we value this constitution. And if we don't value, we lose something, and if we value, we gain something. This gives a chance for everybody to speak to world that we are here under this constitution and we are respecting this, and therefore you are respecting this if you join us. That's what we have to say. Do not underestimate yourself. I have no right to underestimate myself to an extent. This nation is concerned. Yes, I can understand as far as my family is concerned, as far as I am concerned. I can value myself whatever scale I use, but I have to value everybody on equal basis without differentiating based on religion or sex or caste or something else, rich or poor. No, we cannot do that. Everybody is equal. Everyone is equal. And your minds are not equal, of course. Your potential of working is not equal. Your energies are not equal. That is what is required. Everybody has potential. All have different potentials. There are weights, potentials, measures, and you have to use them for this nation. You cannot say I am stronger, I use this much, you are lower, everybody is using according to potential. So use it. At this stage in 2020, we have traveled a distance of 72 kilometers, 72 years to reach here, and we have to review what we have done just to learn what we can do more. But we can take a fresh start also from here. Don't worry about past, it has gone. Yes, lessons will be learned, lessons are on record, history is known. But we have to do something else. From here, how to move. We were told something else about Constitution, but Constitution says something else.
Both are else. Because we did not read it, we ignored it. I am stressing times again and again, times again and again, we ignored it. Why? No answer. But why should we ignore it now? That can be a question. There is no room to ignore this constitution. This is like your subject. This is like subject for everybody, that we have to understand it. In a sense, it applies to us, not to outsiders. It applies to all citizens of this country, and citizen term is very important because it's not slavery. Citizenship doesn't mean slavery. Citizenship doesn't mean you are beggar. Citizen doesn't mean that you are suppressed. Citizen doesn't mean you are oppressed. Citizen doesn't mean that government is king or government is master. No, this is not citizenship. It's not a part of Praja, and government is not king. We all are king. We all are rulers. We all are honors. That is what we have to keep in our mind. ये भारत देश है, संविधानिक है, संविधान हमारे पास है. हमने समझा नहीं समझा ये हमारी प्रॉब्लम है. नहीं समझा तो हमारी गलती थी, और जो हमें समझाया गया वो समझा, वो भी हमारी गलती थी. हमने इसको खोल के नहीं देखा, हमने इसके बारे में नहीं जाना पिछले 70 साल से, तो ये गलती हमारी है, किसी और की नहीं. नहीं जानना भी गलती है और जानकर नहीं मानना भी गलती है. हम दूसरों पर निर्भर रहे, कोई हमें बता दे इसमें क्या है, क्यों रहे, वो हमारी गलती है. लोगों ने बताया हमको इसमें क्या है, अपने हिसाब से बताया, हमने उनके हिसाब से समझा और कार्य करते रहे. भूल गए कि हमारा भी हक है समझने का, हमारा ही फर्ज है समझने का. हमने इसको समझा नहीं, वो हमारी गलती है, हम सबकी गलती है. 135-40 करोड़ या 120 करोड़ या 100 करोड़ या 80 करोड़ जितने भी लोग समय के अनुसार रहे, उन सबकी गलती रही है. पर अब गलती हो गई तो हो गई, क्या करें, सुधारी तो नहीं जा सकती पिछले टाइम की. हाँ, हमें सबक सीखना चाहिए उससे कि हमने गलती की तो क्यों की. वो सबक भी हम नहीं सीखेंगे क्योंकि हम ऐसे अच्छे हैं ही नहीं कि कुछ सीख लिया जाए. हमें क्या लेना है, हमने कमा के खाना है, हमें क्या लेना, नेता जाने, देश जाने, वो जाने, ये जाने. सोचते रहे और क्या हुआ, हमारा घर लुटता रहा, हम देखते रहे. चोर आ गया, अरे साथ वाला देख लेगा, वो देख लेगा, वो देख लेगा. हम सोते हैं चादर तान के और हम सोते रहे, और हमारे घर का सामान आहिस्ता आहिस्ता लेकर कोई चोर भाग गया, पता भी नहीं लगा. हम सोते रहे, वो चोरी करता रहा. हम सोते रहे, वो हमें मारता रहा. हमने समझा कोई सपने में मार रहा होगा, हमने ख्याल नहीं किया. सारी गंद फैला दी उसने, सब कुछ खा गया लूट के. और आज हम देखते रहे वो कहाँ गया हमारा सामान, वो सामान चला गया. चिड़िया चुग गई खेत, अब क्यों रो रहे हो. आज देखो, आज जो हो गया, उससे कुछ नहीं हो सकता. चोर गया, बदमाश गया, लूट गया, ले गया, अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते. हाँ, आगे के लिए सोच लो, वो बहुत जरूरी है. आप तो सोने की आदत इतनी ज्यादा है, सोते रहते हैं, जागते नहीं. अरे कभी जाग के तो देखो, कभी किताब खोल के तो देखो, उसमें क्या लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है. कभी सोचो तो सही. इतना भी नहीं कर सकते आप. फिर आप कहते हो मेरा हक है. किस बात का हक है आपका, आपने किया क्या है. पकी पकाई रोटी खानी है, पकाई पकाई चलती चलती गाड़ी चलानी है. अरे पका पकाया आपको स्वतंत्र देश मिल गया तो आप ज्यादा उछल रहे हो. उनसे पूछो ना, जिनकी जिंदगियां समाप्त हुई थी स्वतंत्रता में, उनसे कभी सोचा आपने, उनका माना. बस एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहो. आखिर क्यों हम इतने भड़कते क्यों हैं. Why do we excite so much in name of politicians? After all, who are they? Are they related to me? Are they related to someone else?
Why do you fight for these politicians ourselves? What is reason after all? Why we are fighting for various parties? What for? Why we are fighting for various leaders? What for? Who are they to me? No one. I have no relation to them. Still I am fighting. I'm abusing my brother, my sister. You are anti-national. Who am I to accuse someone else? You are anti-national. All we are nationals. What right I have got to call someone anti-national? And what right you have got to call me anti-national? Who are you? You are doing it because your mind is not working. I am doing that because my mind is also not working. I should fight for nation, not for these political leaders. They're all crooked. Some higher, some lower. I made them crooked. I am responsible for that. You made them crooked. And now we are fighting. We made them monkeys. Fact is that they are themselves nothing. We empowered them. And they think they are empowered themselves. I am responsible. You are responsible. Try to understand. This is country for all. But they want us fight together, dispute together, and we are doing. That is why I say we must understand our constitution. जब तक हम अपने संविधान को नहीं समझेंगे, हम आपस में लड़ते रहेंगे. हम इसलिए लड़ते रहेंगे कि मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता हूं या नहीं करता हूं, आप दूसरी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं. मेरे कहने को आप नहीं मानते तो मैं एंटी नेशनल आपके लिए और आप एंटी नेशनल मेरे लिए. आप देशद्रोही मेरे लिए, मैं द्रोही आपके लिए. ये बेवकूफता नहीं है तो क्या है? पागलपन किसे कहते हैं? अरे हम सब एक हैं इस देश में, सबको एक से अधिकार है. तो हम इन लोगों के लिए जो हमें बेवकूफ बनाते रहे क्यों लड़ाई करें? सोचिए, आपको किसी राजनीतिक के नेता से क्या लेना है, मुझे क्या लेना है, मेरा क्या रिश्ता है उनसे? ये बात तो सोचनी पड़ेगी. समय आ गया है. हम बेवकूफ बनते रहे, वो बनाते रहे, हम उनके टूल्स बन जाए, उनके औजार बन जाए. क्यों बन जाए भाई उनके टूल्स और औजार? वो गद्दी पे बैठे रहे, आज ये कल वो परसों वो, उनकी गाड़ी चलते रहे, धक्के देते रहे उनकी गाड़ी को. ये बात तो सोचने की है. कोई किसी को भक्त कहता है, कोई किसी चमचा कहता है. आखिर क्यों? आप भक्त हैं होंगे अपने लिए, पर आप भक्त क्यों बने? और आप जिसको चमचा कह रहे हो चमचा क्यों बने? आवश्यकता क्या पड़ी है? कोई आवश्यकता नहीं है. आवश्यकता तो देश को सुधारने की है, देश को बनाने की है. इस बात को हम समझ नहीं सकते. यही तो दिमाग खोलना है. दिमाग की जो आंख बंद हो गई है हमारी, आंख एक तो देखने वाली है. मैं देखने वाली आंख की बात नहीं कर रहा, मैं वो आंख की बात कर रहा हूं जो अंदर से देखती है. दिमाग की आंख, वो दिमाग की आंख को हमने खोलना है. और वो हमारी आंख कौन खोलेगा? वो हमारी आंख खोलेगा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट हैज गॉट आंसर टू एवरी प्रॉब्लम. और आपको वो प्रॉब्लम समझ आ गई तो बात खत्म, प्रॉब्लम समाप्त, कोई समस्या नहीं रहेगी. फिर भारत के हम नागरिक सब जानते हैं, गुलाम नहीं, भारत के नागरिक हैं हम. किसी के सेवक नहीं है हम स्वयं सेवक, अपने सेवक हैं हम, देश के सेवक हैं हम, जनता के सेवक हैं हम हैं सेवक, अपने सेवक. कोई नेता हमारी सेवा नहीं करने आया, कोई नेता नहीं करने आया. काले आ गए, गोरे चले गए, इतना हुआ बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ. आज क्या है? कुछ वो लोग थे जो देश के लिए अपने आप को खो गए, जिंदगी बर्बाद कर गए, सब खत्म कर गए. किसके लिए? हमारे लिए. और हमने उनको क्या दिया? आज की गंध. यही वो सोच के शायद लड़ाई कर रहे थे कि इस तरह से आपस में लोग लड़ेंगे, एक दूसरे को गद्दार कहेंगे, एक दूसरे को चमचा कहेंगे, भक्त कहेंगे, और देश को बर्बाद करेंगे. और कुछ ही समय बात करेंगे. 1947 तक उन्होंने सब कुछ खोया, और 70 साल में सब हम खत्म कर देंगे. इसलिए लड़ाई की थी उन्होंने.
शायद वो भी बहुत दूरगामी नहीं रहे होंगे, तभी वो देख नहीं पाए कि ये हमारे आने वाले लोग कितने गलत होंगे, हरामी होंगे, हमारे खून का पानी कर देंगे, इनडायरेक्टली हमें गाली दे देंगे, हमारी आत्माओं को भड़का देंगे। सोचिए उनकी आत्माएं क्या सोचती होंगी आज आसमान में। इनके लिए हम करके आए थे, इनके भविष्य के लिए करके आए थे। इतने गलत लोग देश को देश नहीं समझते, खड़ा समझते हैं। हर आदमी दावा करता है कि मैं ही तो सही हूं, तुम गलत हो। हम ऐसा सोच के आए थे। हमने इसलिए इनके ऊपर पूरी जानें दी, कुर्बानियां दी। क्या ये सोचने की बात नहीं है? हमने कुछ नहीं किया और हम लड़ाई कर रहे हैं, लूटना चाहते हैं देश को। और जिन्होंने कुछ किया, सब कुछ किया, अपने जीवन खराब किए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, चाहे वो कोई भी रहा हो, उनको क्या मिला? ये देख रहे हो कि ये लोग कैसे हैं, इनके लिए हम सब कुछ खो के आए। हमें जरा शर्म नहीं आती? हम खामा लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं आखिर? हमें तो मेहनत करनी चाहिए साथ मिलकर कि इस देश को अच्छा बना दें, सबके फायदे के लिए, सबके बेहतरी के लिए, ताकि हमारे पूर्वजों के नाम हो दुनिया गई कि देखिए कितने अच्छे लोग थे, कितना अच्छा कर गए थे, कितने इन्होंने इस देश को नाम करके उनका मान सम्मान बढ़ा दिया। वो बात तो है नहीं। गालियां एक दूसरे को हर लेवल पे, ऊपर से लेकर नीचे तक, स्वयं गर्जी, खुद गर्जी, एक तरह की लूट मार, सब लूट लो, सब खा लो, सब पी लो, एक दूसरे को बदतमीजी, गाली, बदमाशी, खून खराबा, सब कुछ। Did we get this freedom from British only for this destination? For this totality? Are you sure this was objective of those freedom fighters who laid their lives forever for sake of our survival, for sake of immediate survival? It's only 72 years. We have expressed ourselves. We have shown our values to world, what we are. It's not 1,000 years post-independence, just 72 years. And we have proved that we are so bad children of those people. We are bad children. Certainly. We are irresponsible children. We cannot do something for this nation. We are only fighting among ourselves. And this is at all levels, all levels. And we have to think on this. We have to beat ourselves. We have to slap on our faces. That's what we qualify for. Because we are nonsense society. We are irresponsible society. We are sleeping society. We are non-serious society. All negative points we own very well, and positive points we don't want to own. We are not able to work hard. We are not able to think for this nation. We are not able to improve ourselves. We are not able to study. We are not able to do. We are just interested in looting all benefits from this nation. This is all like that. All like that. One who gets the opportunity tries to do everything, right or wrong. And who doesn't have an opportunity, he says, oh, I'm not getting this, I'm unfortunate. And once that guy gets the opportunity, he does the same thing. So what we are, now what should we do? It's only that we have to stop ourselves from all these culprits, from all this actors against all illegal actions. We have to study ourselves, investigate ourselves, and we have to put a line on some way that we have to stop, think, decide, and then move further. A kind of new threshold we have to establish on this land. It's 2020, we have to do that way. We have to restudy institutions of our constitutions. We have to restudy all that. Our constitution is not a book. It is speaking to us. It's demanding us to do something. That's what we have to do. Okay, 70 years have gone. We missed everything. We were just believing what we were told, but now that time has gone. We are not to believe something. We have to read and understand. We have to know what we are. Constitution mandates many institutions. It mandates. And we know that, but we don't know thoroughly. We know by name. We know, yes, this is there, but we don't know what they are supposed to do for us, and we are supposed to do for them. What we both have to do for them.
For us, they have to do something. What we have to do for them, that is what it is. Because we are part of those institutions. We are not distant from them. We are included on them directly or indirectly. For example, we have legislature, we have executive and judiciary. These are main bodies that we have. Are we not linked to legislature? We have to question ourselves. Same thing, are we linked to executive? We have to question ourselves. Or are we linked to judiciary? We have to question ourselves. These are main primary institutions. And then there are many other co-institutions which are secondary. Election Commission, CAG, and many others. We have to also relate to ourselves. Everybody is related to each other. But on top of that, on top of all, is supreme institutions, and that is public of this nation, which is real institution. Public is real institution of this nation, which is having power of sovereign status and republic status. Because there is no way somebody can be called king or emir or sultan. No one. Everybody is sultan, everybody is emir, everybody is king, everybody is citizen. We all are, by one notification of unity, are king of this country. That's why we say republic. King has been thrashed, republic has been installed. That's why we are republic, and we have our own power, self-power of public, and that is sovereign status. At one end sovereign, at other end is republic, and in between these 2 points, sovereign and republic, there are 3 points in between, that is called socialism, secularism, and democratic value, democratic state. These 3 are functional, while 2 are permanent. Secularism, socialism, and democracy. These speak a lot for every citizen of this country. And then there are many other institutions which are directly or indirectly supportive, informative, communicative, and transmittive. They transmit knowledge, they transmit information, they transmit a lot, and you can name them by anything. They can be press, they can be channels, they can be public writings, they can be journalists, they can be authors, they can be teachers, they can be intellectuals, they can be whosoever, developing people, scientists, engineers, doctors, all those who use their mind. With all those supports, we get country move forward, country disseminate knowledge among themselves. This is what we have to understand. And we have to screen, we have to scrutinize ourselves. After all, what we have achieved so far. We can go one by one. What is purpose of legislation? What is legislative for us? Is it for us or for outside people? Legislative, what does it mean? This means we write our actions ourselves, what we should do, through our representatives. Legislature. Who are representatives? And what do we write? We have already legislatures. Yes, we have legislatures. We had hundreds of legislative pieces, laws during constructed pre-1947 by British Parliament through legislations or charters. Those hundreds of those were repealed post-independence, and hundreds were adopted, which are still in force. Those laws cannot be ignored and cannot be thrashed, because those are in force, and those are called existing laws. What is law then? Existing law is only law? No, we worked out on laws.
We produce laws even after 1947, and hundreds of laws are there. Those are also called laws. Those are post-independence laws which were enacted by our parliament. British Parliament and our Parliament both enacted laws. So what does it mean? It means there is a body of laws. These are laws, which means prime law, delegated law, regulations, bylaws, orders, etc., and some of them. What does it mean? It's called law. If somebody asks to define law, how shall we define law? Law means statute plus delegated law, delegation law, that's called bylaw, regulations, orders, and whatever else. Some of this is called law. This is law. These laws must comply with all provisions of Constitution of this country, because Constitution is prime law, super law, or what is the king of laws, head of laws. No law, no statute, no bylaw, no regulation, no order, etc. can be passed contravening what's contained, what's provided within the Constitution of this country. If something is like that, some law contravenes Constitution, that can be declared void by court of law. Legislature, this is. We have to understand it first. A common man has not understood that. Legislature is our institution. You can say root institution among our constitution powers. This institution consists something, makes something, produces something that applies to this country for time to come. It's permanent product. It gives in theory, in writing, in declaration, and Parliament does it. And this continues. Legislative business continues, and this is what our Bhagya Vidhata, Bharat Bhagya Vidhata. We write our fortune in details through legislature. This is institution which is permanent but changeable. Every 5 years we change members on these institutions, but institution continues. Legislature continues. And legislature means what? What sort of legislature we were talking of? Legislature is not simply parliament. That is national legislature. Lok Sabha plus Rajya Sabha plus president and plus state assemblies and further details in municipalities, or you can say panchayats, for execution purpose. So legislature is also a key, a chain, a hierarchy in itself. लेजिस्लेचर विधायी का समझने की जरूरत है, मजाक नहीं है। आखिर विधायी का हम क्यों रखते हैं? ये एक संस्थान है जो हमारा भाग्य हम लिखता है, हम स्वयं लिखते हैं हमारा भाग्य, जिसको कहते हैं भारत भाग्य विधाता। केंद्र के लेवल पे हम लिखते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू, संसद के थ्रू, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को सम कर दें तो संसद बनती है। और उसके नीचे हमारी विधायिका, जो हमारी विधानसभाएं हैं देश की, और उसके डिटेल्स आगे जाएं तो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, पंचायत हैं, जो एक कार्य करती है। तो लेजिस्लेचर को समझना आसान नहीं है, थोड़ा सोचना चाहिए। हमें अपना टोटल भाग्य लिखना है इसमें, ये हमें करना होगा, ऐसे करना होगा, इसके अलावा हम नहीं कर सकते। और ये सब हमारे संविधान के हिसाब से होना चाहिए और होता है। और ये संविधान के जो संविधान में दिया गया है उसके अनुसार नहीं है तो गलत इसको कहा जाता है, इसको गलत भी डिक्लेयर घोषित किया जाता है। तो ये एक संस्थान है जो बहुत जरूरी है और जिम्मेदार है। लेकिन ये जिम्मेदार है कि नहीं है, प्रश्न यहां आ जाता है। 70 साल में इसका जो रहा इतिहास, उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जिसे हम कहते हैं
हमें सीखना होगा, पाठ सीखना होगा। पाठ किताब से नहीं, पाठ अनुभव के कार्यों से, कि हमारा अनुभव क्या कहता है, हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है। वो सीखने की जरूरत है हमारी हिस्ट्री से, जो कि हमारी 70 साल की हिस्ट्री। मत भूलिएगा, इस लेजिस्लेचर को जिंदा करने के लिए, इस लेजिस्लेचर को सांस चलाने के लिए, इस लेजिस्लेचर को रोटी खिलाने के लिए, इस लेजिस्लेटर की मशीन को चालू रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा पेट्रोल हम इसको देते हैं, कौन सी बिजली हम इसको सप्लाई करते हैं, हमको सोचना होगा। वी ऑल supply food to this legislature, supply electric current to this legislature, so that it keeps moving alive and work alive. What is that force? What is that food? We have to think on that. That is very important from our point of view. Other institutions are different. But this institution of legislature is top important, top significant, that we have to consider, understand, and decide, after all, who we are, how we are related to legislature. This is very important consideration. If you can understand this, you will solve generally all problems of this nation that we have been facing. If you understand this, it's the sole mathematics of this, sole of this. If you solve it, you will find how to think on that first. What is my relation to this? My relation as a citizen to Constitution, to a legislature, is that I have to write my luck on this book of legislature. This legislature I am working on, this is my legislative body, this is my legislature. I am member of this legislature. I am member as citizen of this country, and all citizens are members of this legislature. This is, imagine a legislature, you are sitting outside parliament and the ground, and all 140 crore people are sitting there conferring, discussing something and deciding. That is an imaginary legislature, but that's a practical one. That's a factual one. There were vast scale, full scale people sitting there, all 140 crore people sitting in ground, and that's a real legislature actually, which has been zoomed down, we have zoomed out, we have been jabbed into a legislative body, small miniature body that is called parliament. Those people have zoomed out. We all have squeezed ourselves, reduced our scale to a small size, and that's called parliament, legislative body. That's called Lok Sabha plus Rajya Sabha plus president, which is a small scale existence of full scale of people of this country. This is our relation. This means we are there in legislature. We all are there. Our communication is there, our aspiration is there, our future is there, our present is there, our mind is there, our thoughts are there, our contemplations are there. That's what legislature defines. You shall not find in legal books, but this is basics of that. Basics of legislature around world. We are legislating what? What actually we are legislating? Are we legislating film story, or poetry, or trigonometry, or physical chemistry, or chemical physics, or what? Or agriculture? What we are legislating there? Do you know answer? It's very simple answer. We are just legislating there how we have to conduct in society, how we have to conduct in public, how we have to define our rights, how we have to define what is our value, how we have to define what is right, what is wrong. All this we have to say. We have to define transactions among people. We have to define conduct. We have to define our standards. We have to define our limit. Means define our limit. Limit means controls. Limits with regulations. We have to define our law of every layer, of every field, every discipline. This is what we decide. That is called legislature. We have to write there how we have to live,
how we have to conduct, what we have to do in every field. That is legislature. That is legislature, and if you understand that point, every problem can solve. Our constitution defines legislature very good way. It defines it in exemplary way, in a specific way, but it doesn't define solve that we have to define ourselves. It defines ways, it defines procedures, but it defines principles of how to live, where we live, how we live, what is our future should be for a collective body of our citizenry. This is what legislature defines. This legislature is not a conflicting body. It's a unification body. It's a body that defines how we have to integrate ourselves, how we have to live ourselves, how to move this country ourselves. We have to move this country logically, legislative wise, and according to what people aspire for, what people think of. We know everybody cannot think same way. People have different aspirations, few have different destinations, yet we have to define a limit. Up to this limit, you have to conduct this way. And below this limit, you have to be there accordingly. But exceeding that limit, that's freedom. There's no limit, it's your performance, it's your power. If you go beyond that line, datum line you can say, limit line you can say, therefrom you can move at an advanced stages your way. But up to that line, you have to do something which is common for every citizen of this country, and that is called legislative control. Problem is here only. This legislature has certain support for its purpose of execution and implementation, and that support is named by union government in our constitution. What legislature commands, what legislature orders, means what people of this country order, what people of this country enact laws, or whatever, A, B, C to Z, that must be executed, that must be implemented accordingly in letters and spirit, keeping in view controls, keeping in view limitations, and depending upon finances. That executive has to work. And that executive means a working body, a body that functions practically, and that is called government, headed by president of this country according to constitutional management. President is head of government, legal head, or you can say title head, and he has one assistant with him, advisory assistant, supporting assistant, executive assistant, and that is Prime Minister of this country. This is called executive. Executive has to work what legislature mandates, what laws mandate. Public have written legislature, public have ordered on legislature, and that must be transformed to executive, that must be transformed to implementation, prosecution, and finally you can say delivery of requirement, and that is called executive. Functional body. So what you can say? There are two groups. One group is primary group, is master group, is kingly group, you can say, a like of royal group, that is legislature, which states something. This means people state something, public states something, and that something, that instruction, that order, that command should be accepted and worked out by executive, means by working government, functional government, not by ordering government. So this group have to work together like that. And when there's a problem somewhere else, there is another independent group which has completely different functions, and that group
is called judiciary of this country, which is something which has no direct interest with either of these two, but responsible for defining supremacy of law, supremacy of constitutional provisions, and to scrutinize, to sort out, to screen, to vet what was done by legislature and what was done by executive, what they should do. It has to evaluate and decide. It cannot legislate, but it can guide. That is called judiciary. It has to solve problems among two. If there are two people fighting, it is judiciary. If they don't agree together, only route to go and have decisions from there. We have to know, talk of, after all, what is our direct role to these. Our direct role as citizens of this country to legislature is top significant, because citizen deals with legislature once in 5 years. It may be central legislature, it may be state legislature, or it may be functional legislature at municipal authority level. Every 5 years we deal once and then we close and come out. This means once we decide something for 5 years, we have no choice after that. We have no interference after that, and that is where a problem is erupted. Because we have interpreted our constitution that way, which is a defective interpretation, which is defective construction, how we feel that. Our feeling is wrong, our consideration is wrong, and our mental setup is wrong. To an understanding of that, we have no role once we write about that legislature, who they should be. That is where we have to concentrate and think of. Public means nation. Citizen means part of public. Citizen is unit of public. I am citizen. This is not my own choice. This is because I am born in this country. I was born in this country, and by virtue of my birth, originally in this country, or by birth relation to certain other person, I am natural. I am not naturalized. I am original citizen, and there are naturalized people also, which are in every country available. So my citizenship says that I am not by choice or something. It is a natural relation to this country that I am citizen, which my constitution awards me through its power. This means citizen is something original. This is by birth and by naturalization or by some other method. But it is original, it is permanent. This cannot be discarded until I commit crime, or I live it myself and join some other country. If I join some other country, I have to surrender citizenship to this country. But no one can pull back citizenship from me, saving I make some crime. Otherwise, there is no one that can change my citizenship on its way. My citizenship is my authority. Or if I lose my mind, I am, you can say, in jail forever, then I have no meaning of citizenship, because I am not at large, I am at small, I am prisoner, or I am not involved in this country in any way. If I am a foreigner or I accept citizenship of some other country, then I am not citizen of this country. Otherwise, my citizenship is my right. No authority is defined in our constitution that can pull back my citizenship except by law, except exclusive circumstances, exceptions, that I do something wrong against my nation. Citizenship, a unit it is.
A white cell of blood it is. Atomic power of my soul it is. Because I am integrated to my country, which defines my citizenship. It's not political party that would define it. It's not constitution that will define it. Constitution awards it. It doesn't define it. Constitution gives me power of circumstances that I am in, by virtue of which I get my citizenship. No one else. Don't underestimate citizenship. It's your basic right. Nobody can give you until you belong to this country. Yes, if you don't belong to this country, join this country, that's something else. But if I am citizen once, I am citizen forever. To my choice. That must be understood by every person of this country, every member of this country. Do not take it lightly. It's not football game, not cricket game, not carom board, not tennis. It's membership of Bharat, India. No one can challenge it. It is my original right, ownership right, that I am citizen of this country, and I declare with pride that it's mine, mine and mine. Do not interfere with this power. Do not attack this power, because I would rebel. I would retaliate. I would set you right if this power is attacked. Remember, no one and no one can speak against my power. If somebody does, be ready to face consequences. Be ready to face music of my attack. Attack by tongue, attack by mind, and if required, I have to decide which offensive measure I have to use as citizen. Therefore, don't feel depressed, don't feel suppressed and oppressed. Speak loud, claim I am citizen. Because you are citizen. We are citizens. We are not begging citizenship from someone. No, from no one. No one can give me citizenship. It's my own. No one can take it from me until I do some crime. Because if I do crime, I have to lose the citizenship. But if I am bona fide, I am supportive of this nation, I am member of this nation, it's mine. It's not relative. It's fundamental, natural. It's not constitutional alone. It's natural. Yes, constitutional is defined. It's defined under laws of citizenship. Constitution, chapter 1 itself defines it. 5 to 11 or 15, see yourself which one is that. And then election part defines it. 325 to 37. So we have to be clear about what we are. They may say anything. Politicians can say anything. They can say, because they are rascals. Had we have real politicians, good politicians, the nation would have been different. But those are business people. I have no shame in calling them industrialists, these politicians, commercially transactors, these politicians, merchants, political merchants they are. For them, politics is a merchant, it's a business, it's commerce, because they are surviving use of that. And that's bad for us. They are not doing service to public, they are cheating public, they are misleading public, and they mislead. And all are misleading, not one. And that's why people hate politicians in this age of 2020, and before that they hated. And they rightly hate.
They rightly hate these people because they are worthless. And I have given new name also to this politics. I call it sewage politics. So you know what is sewage? Sewage is your night soil liquid, which goes through WC, your bathroom, your kitchen room, waste, bath waste, all waste, or accumulation of sewage, mull. I call that sewage because sewage is not final product itself, it is starting product. It has to decompose. Decompose into what? Decompose into final product that is called sludge, a gray color if you take out from manhole. And how does it happen? If you have a septic tank in your home, that's also same thing. Sewage is there. This sewage is decomposed. By what? This sewage is decomposed by power of bacteria. There are two types of bacteria, particularly for this case. One is called anaerobic bacteria and one is called aerobic bacteria. Aerobic bacteria means that bacteria which survives and lives based on air, and there's another bacteria which survives and lives without air, that is called anaerobic bacteria. In sewage, anaerobic bacteria functions means without using air, it thrives, survives and decomposes that part of your stool or urine or your other liquids and results into sludge and effluent. Effluent is liquid part, whereas sludge is solid part. That's function of anaerobic bacteria, which is very good function in fact if you see, because result is good though it is sewage. Result is separation of effluent which goes into drain and sludge which goes into ground, which is extracted out and disposed accordingly for requirement. Effluent can be used for certain kind of irrigation, whereas this is not used somewhere else. But process is very bad, very dirty, offensive smell is there, hydrogen sulfide is there. This is what politics is. Politics, which is supposed to be service, God's service towards people, to society, has been converted to commercial. People are selling their services. Political parties sell their services. They sell what? They sell using tongue, using mouth, using loudspeaker, delivering you promises. We will do this and we will do that, and we do nothing. And people trust in them. We have been trusting them truthfully. Why so we trusted them? And that's why we are emotional society. Our society is emotional, not practical. Our society depends on promises, not right way. We believe in promises without explanation. How shall they achieve those promises? We never ask them questions. Because we are emotional, we trust them. We think that they are our brothers and sisters, they are our family people, they would do for us good. That's what we think. And when you use emotions, there's a conflict of mind between them. Emotion means you are not in your mind level. Emotions means you are not in your use of mind. You reduce use of mind. You negativate your mind when emotion comes into play. Emotions is soul based. It's you can say not complete strength of soul is used, that's called emotion, or you use over strength and you suppress your mental thinking capacity. So we people have so far been emotional in last 70 years, expecting everything positive without consideration of what negative impacts on us, without consideration of what these political people speak about and what they do or don't do. Again, I go back to legislature because my talk is about institutions of this country. And this is the right time to discuss about that, depending upon what's happening in national scenario. Time has come that we have to reconsider power of our constitution. We failed to understand it till now. We have to understand it in terms of its soul and letters. We cannot simply say this is constitution, forget it. Just like we are in college and we have some program to study and say, okay, we don't study this subject, we study this one. We cannot leave to chance. We are supposed to understand this constitution.
It's not English or Hindi or Sanskrit. It's question of contents of this constitution, what these constants demand and speak about us, what we are. They define us. They define our future. They define what we should get from this land. And that's what the Constitution is all about. It defines our relation between public and legislature, between public and executive, between public and judiciary, and between public and masses. Constitution defines relations between legislature and executive, between executive and legislature, between legislature and judiciary, between judiciary and executive, and between judiciary and masses. It defines our relations. It defines our silver lining. It defines our limitations. And every institution has limitations. Everyone has functions, have roles to play, which we never realized, we never understood, and result is that we are in control of none. Public is in control of none of these institutions, and there where we fail. Public is a controller of everybody. It is public that is honor of this nation. It is neither legislature, not executive, and not judiciary. Public is honor of this nation. Everybody has limited functions. It may be judiciary, it may be legislature, or it may be executive. Public is total and above all. That is we have to understand. People shy, people hesitate to speak that, where problem lies. But hesitation will not solve problem. हम झेपते हैं, डरते हैं बात करते हुए. क्यों डरते हैं? अनपढ़ गवार हैं क्या? किसी का उधार लिया है क्या? क्यों डरा जाए? सच बोलने में क्या डर है? सत्यमेव जयते. Truth always triumphs. Speaking truth doesn't mean worrying. After all, why do you worry when you speak truth? किस बात से घबराहट है मुझे? किस बात की झेप करूं मैं? देश का नागरिक हूं, गुलाम नहीं किसी का. देश मेरा है, अमेरिका का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बर्मा का नहीं, किसी और का नहीं, मेरा है. मेरे भारतवासी हैं इसके मालिक. किस बात का डर है मुझे? खुल के समझना होगा और बोलना होगा कि मैं क्या हूं, मेरा देश क्या है मेरे लिए, मैं क्या हूं देश के लिए. मुझे जानना होगा मेरा रिश्ता क्या है. लेजिस्लेचर से क्या रिश्ता है मेरा, विधायिका से क्या रिश्ता है मेरा. मुझे समझना होगा मेरा न्यायालय से क्या रिश्ता है. मुझे समझना होगा मेरा कार्यकारी से क्या रिश्ता है, और मेरा देश की जनता से क्या रिश्ता है. मुझे समझना होगा. मैं नहीं समझूंगा तो अपने देश का नुकसान करूंगा. मैं नहीं समझा इसलिए नुकसान हुआ आज तक. अगर मैंने समझा होता 70 साल में तो शायद देश कुछ और होता. नहीं समझा हमने, क्योंकि हम समझने में बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि हम भावनात्मक हैं. हमें समझना होगा विधायिका में और कार्यकारी में क्या रिश्ता है. हमें समझना होगा विधायिका में और न्यायपालिका में क्या रिश्ता है. हमें समझना होगा न्यायपालिका में और कार्यकारी में क्या रिश्ता है, और इन सब से पब्लिक में क्या रिश्ता है, सार्वजनिक क्या रिश्ता है. ये बातें हमें समझ नहीं होंगी. वो सब समझते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं न्याय वाले, वो सब जानते हैं. हमारी प्रॉब्लम समस्या कहीं और रुक जाती है कि हमारे देश के जो अपने आप को नेता समझते हैं, या जिनको हमने नेता बना दिया, जो जरूरत से ज्यादा समझने लग गए. उतना समझना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन वो समझने लग गए कि वो इस देश के उद्धारक हैं, वो इस देश का बेड़ा पार कराएंगे. वही गलती हो गई. जब किसी को आप आवश्यकता से ज्यादा अधिकार दे दें, उससे ज्यादा उसका काम दे दें, बिना सोचे समझे, बिना जाने कि वो कितना काबिल है, वो कितना कर सकता है, आपको नुकसान ही होगा. आप जरूरत से ज्यादा, उसकी काबिलियत से ज्यादा, उसकी एबिलिटी से ज्यादा, उसकी आप क्षमता से ज्यादा आप काम दे देंगे, वो काम नहीं कर पाएगा, गिर पाएगा. क्या झूठ बोलेगा कि मैंने ये नहीं किया इसलिए नहीं किया. आपका ही काम वो आपको ही डाल देगा, आप ही को जिम्मेदार बना देगा. हमको ये सब देखना चाहिए. वो जमाना नहीं है अब विश्वास पे काम किया जाए. विश्वास पर आजकल विश्वास नहीं रहा. अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं करिए, लेकिन ये सोच के करिए कि ये विश्वसनीय नहीं भी हो सकता. कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप किसी पे विश्वास करते हैं तो कीजिए, उसको आप जिम्मेवारी दीजिए, लेकिन साथ में
एक दूसरा रास्ता भी रखिए। अगर इसे नहीं किया तो मेरे पास इसका दूसरा रास्ता ये है, तभी आप पास हो पाएंगे, नहीं तो आप अपनी मंजिल नहीं पा पाएंगे, क्योंकि झूठ का बोलबाला चल रहा है, सच पीछे रह गया है। हम कहते हैं सत्यमेव जयते, कहते रहे। सत्यमेव जयते ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उसको धक्का दिया जाता है, वो गिर जाता है। गिराया नहीं जा सकता, गिर जाता है, फिर उठ जाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। गाड़ी निकल जाती है, ट्रेन चली जाती है, फ्लाइट उड़ जाती है। यही बात समझने की है। 70 साल खो दिए, कोई बात नहीं, गए। हम उस पर बहस कर लें, लड़ लें, उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसने किया, उसने नहीं किया, उन बातों में और 70 साल खराब कर दें, ये बात सही नहीं है। 70 साल गए तो जाने दो। हम जानते हैं समय वापस नहीं आता, हम जानते हैं, फिर क्यों लड़ना उस पर? गए तो गए, गए, आने की बात करो, आगे की सोचो। और मैं नहीं, सब सोचें। देश के 130, 35, 40 जितने करोड़ लोग हैं, सब सोचें, तभी हम संविधान को संवैधानिक काम करने देंगे। नहीं तो ये संविधान एक रद्दी की टोकरी बन जाएगा, बेशक इसको हटाया ना जाए। अगर आप चाहते हैं आपका संविधान रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए तो मस्त रहिए, चिंता मत कीजिए देश की, लूटने दीजिए देश को जो लूट रहा है, आग लगाने दीजिए जो आग लगा रहा है। अधिकार फिर कुछ नहीं होता। लाठी भैंस, भैंस लाठी चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको संविधान चाहिए या जिसकी लाठी उसकी भैंस चाहिए, ये डिसीजन आपको लेना है। विच वन इज यू आर ऑप्टिंग फॉर? माइट इज राइट और राइट इज राइट? You have to decide as people of this country. You want might is right or you want constitutional right? You want power of constitution or power of gundagiri? You have to decide. Might is right means gundagiri, badmashi, dadagiri, 10 numberi bana, that is called might is right. And if you want no, we want a civilized society, we are a regulated society, we are a society that respects laws of everybody, rights of everybody. If you want that type of society, then you have to think for complete analysis of this constitution, analysis of these institutions, and analysis of your relations to these constitutions, which is very important. This type of talk I am making to you, I am delivering to you something else, because I am expressing what I think about this country, about this constitution. And be clear, I am not expert of law, I am not expert of judiciary, I am not expert of anything. I am a common citizen and I want to be a common citizen, though I am expert in some other field. That field has nothing to do with this talk. This is talk by a common citizen, ordinary, very lowest class citizen. And this citizen is talking you in capacity as brothers and sisters. That's all. I am just explaining what we should do. Your mind may be different, your option may be different. You may call me foolish, thank you very much. You may call me intelligent, thank you very much. You may call me whatever you want, I don't care for that. When I am talking in national interest, I can even accept your abuses, I can accept your appreciations, I can accept everything. But question is, it should move. And even you abuse me, I don't care. Because I am not doing any crime, I am just disseminating what I think. And expression of mind is fundamental right. And I am writing formally, I am speaking formally. It's nothing hidden. And my relation to political people is zero. Be clear, again told, I have no allegiance to any political party. Currently, I cannot say about future because I don't know future. Maybe I am alive tomorrow or not, who knows? And I have absolute allegiance, total allegiance to constitution of my country, which I am not bound, I accept it. Everybody is bound to speak that way, to think that way, if you want to be citizen, and I respect citizenship as my destiny, tool, power, weapon to work for this country, to make this country better with my further other capacities, which I have earned, because I have not earned citizenship, it's natural. But other capacities I have earned during my experience, which are different than citizenship. Therefore, time has come
that we completely study our constitution and ourselves. We have to know relationship. हमारा इनसे क्या रिश्ता है जानना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, और खाली जानना नहीं, इसको हम कैसे ले सकते हैं, कैसे और अच्छा बना सकते हैं, वो जानना जरूरी है। अभी तक हमें धोखा दिया गया। उन लोगों ने जिनको हमने इन सीटों पर बैठाया पिछले 70 साल से, कोई भी हो, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं उसमें। देश के वासी सारे हैं जो उस देश में रहते हैं, और उनका हक है, उनका कर्तव्य है, अपने हिसाब से, अपनी क्षमता से इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश के लिए काम करें। इसमें कोई रुकावट नहीं किसी को। इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश का सदस्य होने के नाते हमें पूरा अधिकार है। हम अपना काम करें, सोच समझ के आगे बढ़ाएं, ये सबका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार तभी सही प्रयोग होगा जब आप समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ कोई लाट साहब नहीं है, कोई सबसे बड़ा या छोटा नहीं है इस देश में। पोस्टें हैं, कार्यालय हैं, अधिकार हैं, लेकिन वो प्राप्त किए जाते हैं, वो दिए जाते हैं। अगर हम ये समझ के बैठे तो हम समझते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री है, इस देश में राष्ट्रपति है, वही सब कुछ है। इस देश में चीफ जस्टिस साहब हैं, वही सब कुछ है। या इस देश में हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, वही सब कुछ है। ऐसा है और नहीं भी है, दोनों बातें। बहुत मुश्किल बात है ये समझना, कहना आसान है। आपको एक्चुअली क्या चाहिए और ये क्या देंगे हमको, ये समझना है। हमें न्यायालय क्या देगा, हमें कार्यकारी क्या देगा, और हमें लेजिस्लेचर क्या देगा, या हम इनको क्या देंगे, हमें समझना पड़ेगा। उस देश में क्या होता है या उस देश में क्या होता है भूल जाओ उन सबको। हमारे देश में क्या होता है वो समझना जरूरी है, और हर व्यक्ति को समझना जरूरी है, हर नागरिक को समझना जरूरी है। डांस करने से, कूदने से, चिल्लाने से, शोर मचाने से समस्या का हल नहीं होगा। वास्तव में देखो तो समस्या है ही नहीं। सच बताऊं मैं, कोई समस्या नहीं हमारे देश में। हमारे देश में एक ही समस्या है कि हम सोचते नहीं हैं, यही समस्या है, और कोई समस्या नहीं है। और कोई चाहता नहीं, इस देश का नता बड़े से बड़ा व्यक्ति जो बैठा है ऊपर, वो नहीं चाहता कि आप सोचें। यही एक लड़ाई है। भारत का नागरिक सोचना चाहता है, सोचने को तैयार है, लेकिन सोचने नहीं दिया जाता, या वो सोचना नहीं चाहता, वो सोता रहता है। और ये जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं हर फील्ड में, ये जागते रहते हैं। जब आप सोते हैं ये जागते हैं। है बात समझ रहे हैं? उल्टा है रिश्ता आपसे उनका। जो होना चाहिए वो नहीं है। ये चाहते हैं आप सोते रहें, उस टाइम ये जागे और आपकी तिजोरी साफ कर लें, आपका सामान साफ कर लें, और जब आप उठे ये सो जाएं, ये भाग जाएं, या आपके सामने भी ना आए। ये रिश्ता वास्तविक है, और जो होना चाहिए वो नहीं है। आपका सोचना इनकी दुश्मनी है, और ये जो करें आप सोइए, ये इनकी दोस्ती। ये चाहते हैं, सोचें, ये आपका ये प्रयोग करें, आपका ये यूज करें, और उसके बाद आप सुलाएं, दोबारा सो जाएं, क्योंकि सोना इनके हिसाब से आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आप जागेंगे तो चाय मांगेंगे, रोटी मांगेंगे, और चीजें मांगेंगे, ये आपको दे नहीं सकते। तो कहते हैं सोते रहिए, बहुत समय है, उठ जाना, अभी देर है काम पे जाने के लिए, और सो जाओ। यही रिश्ता है इनसे आपका वास्तविक में। सच बताऊं तो 70 वर्ष हम सोते रहे थे, क्योंकि हमें सोने की इतनी आदत थी। उससे पहले भी हम सोते रहे थे, इसलिए हम गुलाम कहलाते रहे। हम नहीं सोते तो हम गुलाम भी नहीं कहलाते।
हम गुलाम क्यों कहलाते रहे, हम सोते रहे। और वो आदत इतनी पड़ गई सोने की आदत, मुझे नहीं पता कितने साल से सोते रहे, 1000 साल से या 2000 साल से। वो इतने आदत सोने की बन गई कि हमारे हार्मोन्स में सोने के डेवलपमेंट होने लग गए और हम वो निकाल नहीं पाए अभी तक। हम अपना रिश्ता जागने से बना नहीं पाए। हम जानते नहीं कि जागरूकता क्या होती है, वो हम अभी तक समझ नहीं पाए। हम बेशक पढ़ लिख गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, बहसबाजी करने लग गए, लेकिन जागरूकता हमें समझ नहीं आई। इसका मैं उत्तर देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आपने कभी कोई टीवी चैनल शो देखा होगा, ऐसा ही होते हैं जहाँ नेता को किसी को बुला लेते हैं और कुछ लोग बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, अब दूसरे बैठ जाते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ नहीं होते हैं, और इसके आंसर जो पूछा जाता है, एक आंसर में तो भी ताली और दूसरे आंसर में तो भी ताली। उन बेचारों को समझ ही नहीं आता उस आंसर का मतलब क्या, ताली बजाए जाओ। इसे कहते हैं जागरूकता नहीं होना। अगर आपको आंसर सही भी मिल रहा है तो भी समझ नहीं आएगा, और आंसर गलत भी मिल रहा है तो भी समझ नहीं आएगा। ताली बजाओ बस, ताली बजाने वाले बन गए हम। शोर मचा, ताली का मतलब है क्लैपिंग करना, शोर मचाना। बचा दो जी, आंसर मिल गया, लेकिन आंसर क्या मिला वो समझ हमको नहीं आया और ना आएगा। हम नींद से जागेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, और नींद से जागेंगे तो ये वाले नेता यहां नहीं होंगे। यही रिलेशन है हमारा इनसे। हमारे नेता कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारे आज के नेता नहीं चाहते आप जागे। वो आपको चाय भी पिला देंगे, कहेंगे भैया सो जाओ, दोबारा सो जाओ, भी बहुत थक गए हैं आप, बहुत काम किया था। जिस दिन नागरिक जागता है उस दिन नेता भागता है, याद रख लेना। और जो नेता नहीं भागता आपके जानने के बाद, वो आपका सच्चा साथी है। जो आपकी बात का जवाब दे वो सच्चा साथी हो सकता है, जो आपको गुस्से में जवाब दे तो वो और भी अच्छा साथी हो सकता है, और जो आपको प्यार से बताए वो आपका साथी कभी नहीं हो सकता, याद रख लेना। क्योंकि आपकी समस्याएं गंभीर हैं और आपका जवाब वही दे सकता है जो आपकी समस्याओं की स्टडी जिसने की हो और जो उनका उत्तर जानता हो, जो उनका हल जानता हो। और वो राजनीति का नेता नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। गांधी जी ने आपकी बातों का जवाब दिया था, सुभाष जी ने आपकी बातों का जवाब दिया था। वो राजनीति के नेता नहीं थे, वो देश के नेता थे। और जो आजकल हैं वो देश के नेता नहीं है, वो राजनीति के लफंगे हैं, राजनीति के कर्मचारी हैं, राजनीति के लुटेरे हैं। उनको आप राजनीतिक नेता कहते रहिए, वो देश के नेता नहीं है। देश के नेता आप बनिए। आप बनना चाहें तो बन सकते हैं, क्योंकि आप अभी जीना चाहते हैं। आप दिन से जाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप सोने की भी कोशिश कर रहे हैं, बस समस्या वहां के रुक जाती है। एक सोता समाज मृत्यु जैसा होता है, वो उठना नहीं चाहता, क्योंकि उठ के थकावट होती है, यार फिर सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाते हैं, अभी देर है। ऐसी आदत जब पड़ जाए तो याद रख लेना, ज्यादा सोने का मतलब दिमाग का भी सोना होता है। आपका शरीर सोता है तो दिमाग भी हल्का हो जाता है, वो काम भी फिर हल्के से ही करेगा, जिम्मेदारी से और एफिशिएंसी से नहीं करेगा। अब आपके पास 130 करोड़ दिमाग हैं, होंगे आगे जाके 150 करोड़ भी होंगे। उनमें से कितने काम के हैं, सवाल ये उठता है। अगर 140 करोड़ में 140 करोड़ ही खराब है, बेकार है, तो आप हैं क्या फिर? ये गिनती के 1000 दिमाग, 5000, 10,000 दिमाग, 1,00,000 दिमाग, ज्यादा से ज्यादा इतने ही होते हैं राजनीति में। ये आपके दिमागों को छीन लेंगे, लूट लेंगे, आपका काम सोचने की शक्ति आपकी खत्म कर देंगे। उसके बाद आप जानते हो पागल के सामने क्या होता है, आप एक तरह से हैंडीकैप हो जाएंगे, जिसको आजकल दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग। ये आपको हैंडीकैप बनाना चाहते हैं दिमाग से। एक बार आप हैंडीकैप हो गए तो इनकी आपकी कैप इनके हाथ में, आपकी जिंदगी इनके हाथ में। आप मेहनत कीजिए, कमाइए, पसीना बहाइए, दिन भर काम कीजिए और पैसे इनको देते रहिए ऐश करने के लिए। यही तो हो रहा है, सच्चाई तो यही हो रही है। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो दिमाग खुल जाएगा,
आपका दिमाग खुल जाएगा तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इन लोगों ने आप पे कंट्रोल किया हुआ है, कुछ हजार लोगों ने करोड़ों लोगों पे कंट्रोल किया हुआ है। कितने अच्छे लोग हैं वो, कितने शक्तिशाली हैं, सोच लीजिए। अगर कुछ हजार या लाख लोग पूरे 140 करोड़ लोगों पे कंट्रोल कर लें तो आप खुद सोच सकते हैं वो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। शक्तिशाली शरीर से नहीं है, वो शक्तिशाली दिमाग के नेगेटिव वैल्यूज से हैं, दिमाग के क्रूरपने से हैं। वो बिजनेस करना जानते हैं, वो आपके बिजनेस कर रहे हैं, आपके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, सामान नहीं बेच रहे, आपको बेच रहे हैं। ये संविधान को हमें इसी एंगल से समझना है। संविधान ने हमें सारे हक दिए हुए हैं, ऐसा कोई हक है नहीं जो संविधान ने हमें नहीं दिया। हम संविधान को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन कसूरवार नहीं है। हम उसका यूज नहीं कर पाए, हम उसको समझ नहीं पाए, हम जान नहीं पाए। We fail to understand our constitution each and every respect. We could not understand what is written in there, what is meaning of that clause or article. We could not understand what our constitution defines, what it mandates for every citizen. We fail to understand the value of citizenship. We fail to understand value of our vote. We fail to understand everything what it defines and gives to every citizen of this country. And that is the reason these political criminals, these about not maybe around lakhs or thousands, these people have tied our prison. They have taken control of our brains of this country, people, of particular people, and they are dancing. They are asking us dance this way or dance that way, and we are dancing according to their commands. We are not using our minds, and we are unable to use our minds because our minds have been slapped. We are sleeping. We cannot rise, and we cannot rise. We cannot work. They say take tea and sleep again. Take food and sleep again, and then wait for 5 years to rise again, and vote and sleep again. We work day and night, they tax money, and they take money and enjoy their life. They are so powerful that they control 140 crore people in one go, and they control our minds, and we act according to their commands, their requirements. They say speak this, we speak that. They say I am your leader, yes, you are our leader. That is where problem lies. We have thought that these people, these leaders, are our constitution. No, these are not constitution. Our constitution is there. We open this. We have kept it closed and locked. We have to take out from that lock. We have to take out from the wardrobe and read it. And read full. We were fools for 70 years. We don't want to fool for more years. We have been used by these people. They don't want us to use our minds, where we should be careful. Use of mind means you are learning. If you start learning, you start using minds, and use of mind means enemies generation for this political issues. If you are studying, you are opening your cells of brain, you are training your mind to learn. That is a stage where these people think we are generating their enemies. That is what I say. Learn your relation to Constitution. And first class says, first learning is you understand what is legislature. Legislature shall teach you. If you understand definition of legislature, which is very clear, you have to write your luck. You have to write your future depending upon your current circumstances and depending upon how to meet future requirements. That is what is legislature. It's very small as well as very big, because thousands of laws are required for whole nation and thousands are existing. Every problem is related to existing laws, every problem related to all laws. Laws are supporting tools for problem solution, and we have to define that. That is very important. And judiciary also depends upon legislature, because whatever product is released by legislature in form of statutes or laws or bylaws or regulations or whatsoever, or government orders, those are required to be vetted, to be filtered, to be examined,
to be screened by judiciary if there is a challenge. If no challenge, judiciary does not do anything on its own until there is emergency. So judiciary is your support to an extent what I enumerated is concerned. That is the role of judiciary. Judiciary role comes only into play when you access to judiciary with certain complaint and judiciary has to act there. This means role of judiciary is also very limited. It's not a commanding role, cannot be, because judiciary is not looking after all your works, all your legislative work. Judiciary is not looking after for everything. Judiciary is of course supreme, but supreme for purpose of laws and legislature and executive, not for your purpose. You can consider judiciary as supreme, but not for everything. It is supreme in authority, not in detailing. Just remember, it's legislative and executive that are working together, and if they do not work together, there's a problem. There's a sheer problem. Executive has to run details, what are decided, what are ordered by legislature, and that is what executive is all about. That should be smooth relation, that should be cordial relation, coordinated relations, relations with complete understanding, which is very difficult because thousands of laws are there. It's not simply central laws. State laws are also related. Every state is on laws according to state list and according to, you can say, concurrent list, whereas central is also responsible for all laws according to union list and according to concurrent list. These points must be clearly understood by citizens who have failed to understand. I know that all cannot understand that. Everyone cannot understand this because citizens are all of ages. But an understanding continues. It should be taught, it should be learned. What's happening now? We have failed to understand legislature and we fail to understand our executive. Result is that we are facing crisis at national level. It's not crisis of CAA. No, it's not crisis of NRC. These are developments. Crisis is something else. Crisis of trust. Lack of trust between public and legislature. Lack of trust between public and executive. And of course, to a certain degree, lack of trust between public and judiciary. These are lack of trust relations which have built up during these 70 years of our constitution life. These missing trusts have led us to havoc. People do not trust legislature now because legislature has gone into hands of those who do not value democracy. Executive has gone to hands of those who do not respect democracy. And because this legislature and executives are powerful by virtue of law mandate, constitutional mandate, these people to some extent can dictate judiciary, though it's independent yet, because appointing authority of judges somewhere lies in hands of prime minister and president. Judiciary is also partly affected because judges are also human beings. They are also dependent to some extent on these other institutions, and to say frankly, they are not absolutely independent. Though there's a silver lining, there's a demarcation in constitution, but that is not seen in practice. So relationship among these three is also disintegrated, and public trust in judiciary is also parted because public is not getting what it should get from judiciary. Instant decisions, instant judgments,
If there's a variation from 10 to 40 years or 30 years for adjudicating certain cases, how can you expect there can be built a trust, efficiency trust between judiciary and public? You have to do some work in 1 year and the disputes take 20 years. There's no scale measurement then. Hence, judiciary function can be called as inefficient. Judiciary is inefficient, frankly speaking. Whatever may be reason, I'm not going to that reason because there will be different part of talks. Public expect judges and judiciary to deliver adjudication in certain assumed or defined time. Definition doesn't exist, but there is a limit. A person should suffer, but judiciary has not worked that way in last 70 years because of some reasons, limitations on this itself from legislature or executive. My brainstorming is about public relations with institutions. Because if you want to understand Constitution, you have to understand these relations first. My relation, citizens' relation to legislature and citizen relations to executive. Of course, relation to judiciary works, but that's at end you can say when your rights are in question, your fundamental rights or constitutional rights or your natural rights are in question, then of course judiciary comes into play with citizen. My other question is you have to open your eyes, and if you cannot open your eyes, you cannot even answer something. Speaking is very easy, but don't forget you can speak only when you study something. It's not plain speak, it's speech in relation to some discipline which I am not expert of, but as citizen of this country I can understand what people want, what they aspire for, and what is constitutional about. Understanding of Constitution itself is very important, and those who cannot, better keep silent. First try to understand what you are speaking. Just speaking to people without any basis, without any meaning, has got no meaning at all. After all, this is illiteracy that makes us speak anything without understanding. Our legislature at central level is a leader in itself. It's leader one, you can say, because it writes public luck. It writes what is your future. Future as nation, body. Future as citizen. This is legislature, which is top line, which is a Jan Gan Man, Adhikan Adhinayak Jay Hoye, Bharat Bhagya Vidata. If you understand that meaning, what public is, Jan is, what Man is, Man Gan is, all are public. And what is Bharat, we are country, and Bhagya is fortune, and what is Vidata means God or fortune writer. This means our part of luck writing, our part of future writing, we have appointed this legislature per constitution mandate. Means we are in legislature, you imagine that. You are enacting laws through legislature. And who is working there in legislature? In legislature, people whom we appoint through election using our adult suffrage. Those people work on our behalf and they project our aspirations, our destinies, or total destiny or total requirement onto certain piece of paper that is converted into act or law or statute. That is relation between citizen and legislature. It's not simple relation. This relation continues all days, all 5 years, and every 5 years, and all 5 years. This relation is very significant
because we leave to those people who work there on our behalf. But we stop there. Problem is that we stop there and forget that. Of course, they work for us. They should work for us to fulfill our aspirations, to solve problems, hundreds and thousands of problems that are encompassing within or merged within public, and they have to solve it. Only examination of investigation is, or we can say lead or please, we have to ensure whether they work or they fail to work. That is where we have to study before understanding what is our nation. If we cannot use our legislature for public rightly according to the spirit of our constitution, we cannot gain anything. We are not very well matured, we may say, as individuals, but as society, we should be very matured. That is what constitution requires. Problem is not of language, problem is of understanding. Every person has different understanding. Every age teaches a person, and it depends upon also your education and your development of common sense based on that as some education. Because education means you develop your senses. My mind gives one opinion, your mind can give another, because of our different approaches, our different mental powers, our different calculations. But it doesn't mean that those are wrong. Both are right. Whatever I say, whatever you say, both are right. But that right or wrong depends upon your feelings, your sense. But you will give same answer if you think keeping abreast between you and myself, nation first. If I use Bharat first, then I think our opinions would differ. When we think Bharat first means public first, not private first. If you think Bharat is main, I think my opinion and your opinion shall certainly change, and we will reach certain common understanding, and that is what is required. That is what is required. Because when we think something, when you can immerse ourselves in certain issues or certain problem, we think it is only this problem aspect. We forget all other aspects. That is where we have to re-examine our constitution for. Because we missed our constitution from study viewpoint. And those who use it, I think they use it only from reading viewpoint, not from its understanding viewpoint, not from its analytical viewpoint. And because it is meant for all, it has been ignored by all virtually. When something is very powerful, either people adopt it fully or they are afraid of it. This happens. It's not physics, which is only for physics students. It's not chemistry, which is for chemistry students, or algebra for maths students. It is constitution for 140 crore people of this country, and that is where problem lies. This is document having full weight, having full technique, having full future power, having our principal thoughts, our minds. It speaks our minds, our future. But everybody cannot understand what that speech is all about, how to break and understand. That is where we fail. And we have to pass there actually. And we can pass only when we can understand this. If you cannot understand this, no use. दो बातें करते हैं दो लोग,
लड़ते हैं, आपस में बहस करते हैं, समझते दोनों नहीं, बस उस बात को समझते हैं जिसमें बहस कर रहे हैं। मेरा दिमाग कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है, मेरी सोच कुछ कहती है, आपकी सोच कुछ कहती है। लड़ते जाइए, समझना नहीं है, क्योंकि मैंने जो सोचा मैं सही हूं और आप जो सोचते हैं आप सही हैं। अब दोनों सही हैं अपनी जगह, लेकिन हम संविधान को भूल जाते हैं। मैंने जो कहा यह सही, आपने जो कहा सही, आप गलत है मैं गलत, बहस करते रहिए, लड़ते रहिए, कोई अंतर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चले जाएंगे लड़के। लेकिन यदि आप देश के लिए बात करें, देश के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़ें, शायद आप इस तरह की बहस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहस आपकी व्यक्तिगत थी, आपकी अपनी सोच पे थी। अगर मैं संविधान को बीच में रख के सोचता हूं, देश को बीच में रख के सोचता हूं, तो शायद हम दोनों ही कुछ और सोचेंगे। यदि हम व्यक्ति हैं, यदि हम जानवर हैं तो बात अलग है। यदि हम थोड़ा भी दिमाग रखते हैं, थोड़ी भी समझ रखते हैं, दोनों जिनमें डिफरेंस है, लेकिन जब भारत को सामने रखेंगे, भारत की पब्लिक की समस्याओं को सामने रखेंगे, देश को सामने रखेंगे, अपना नजरिया नहीं बीच में डालेंगे, तो शायद हमारी सोच करीब करीब एक सी ही होगी। फर्क हो सकता है थोड़ा बहुत, हर एक में होता है, लेकिन कॉमन सेंस कहती है वो दोनों एक ही रास्ते पे आ जाएंगे, जिसकी है आवश्यकता आज की तारीख में। आज हम अलग अलग रास्तों पे चल दिए, कोई हिंदू के रास्ते पे जा रहा है, कोई मुस्लिम के रास्ते पे जा रहा है, कोई किसी रास्ते पे जा रहा है, कोई किसी रास्ते पे जा रहा है। वो रास्ते आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते उन रास्तों को लेके आप, क्योंकि ये मंजिल है ही नहीं। कोई हिंदू की मंजिल नहीं है पाने की, कोई मुसलमान को मंजिल नहीं पाने की, वो मंजिलें मिलेंगी नहीं उनको। वो मिलेंगी तो मृत्यु के बाद मिलेंगी, पहले नहीं मिल सकती। हम उन मंजिलों की तलाश में जो मंजिलें हैं ही नहीं, लेकिन जो मंजिल है हम उसको नहीं प्यार करते, हम उसको नहीं जानते। मानवता की मंजिल हम नहीं जानते, भारत देश को बनाना है अच्छा, वो मंजिल हम नहीं जानते। हम तो लूटना चाहते हैं, लूट लो, पड़ा है उठा लो। अरे पड़ा था सड़क पे, मैंने उठा लिया, तुम्हारा क्या ले लिया? आपका तो मैंने कुछ नहीं लिया ना। ये भूल जाते हैं कि जो सड़क पे पड़ा था उस देश का था, उस देश का सामान था, आपका भी नहीं था जो आपने उठा लिया। यही सोच का फर्क है। एक कहता है मैंने उठा लिया, मेरी किस्मत में था, और दूसरा कहता है कि देश का था। बस यही अंतर है। जिस दिन आप इस अंतर को खत्म कर देंगे, आप देश का स्वास्थ्य बन जाएंगे, आप देश का भविष्य बन जाएंगे। आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक साथ सोचेंगे। आज हम एक साथ नहीं सोचते, ये हमारी गलती है, और शायद हमारी भी गलती नहीं है। हमको ऐसा सिखाया ही नहीं गया है कि आपको देश के लिए सोचना है। हमको सिखाया है अपने लिए सोचिए। क्या रखा है देश वेश में? बहुत देखे देशभक्त, बात भक्त पे आ जाती है, फिर भक्ति पे आ जाती है, आदमी पे नहीं रहती। भक्ति जो कल्पना है, भक्ति जिसका अस्तित्व ही नहीं है, भक्ति जो होती ही नहीं है कुछ भी। आप खाली सोचते हैं मैं भक्त हूं, आप हैं कुछ नहीं। और जिसका भक्त होना चाहिए उसके आप है नहीं। जबरदस्ती कहते हैं भक्त हूं मैं देश का, लेकिन आप देश समझते नहीं। आप देश का ज्ञान नहीं समझते, आप देश का ज्ञान नहीं समझते, आप देश की समस्या नहीं समझते। बस किसी ने बेवकूफ आपको बना दिया, बेवकूफ बनते जाते हैं। आप क्यों देश को किसी के थ्रू समझना चाहते हैं? आप सीधा क्यों नहीं समझना चाहते? आप देश को किसी दूसरे के दिमाग से क्यों समझना चाहते हैं? आपका अपना दिमाग है, आपका अपना शरीर है, आपकी अपनी आत्मा है, और आपके सामने मंजिल है, देश की मंजिल। वो आप नहीं समझेंगे। मानवता की मंजिल वो आप नहीं समझेंगे। हाँ, गधे आप बन जाएंगे, और मेरा गधा गधों का लीडर आप गाना शुरू कर देंगे। यही समस्या है इस देश में, और ज्यादातर जो आज डेवलप देश हैं वहां ये समस्या इस तरह की नहीं है। हमारे यहाँ नियम कानून है और नहीं भी है, हमारे यहाँ मानव है नहीं भी है, हमारे यहाँ दोस्ती है नहीं भी है। हाँ, एक दूसरे को गाली देना हमको अच्छी तरह आता है, हम सही हैं तू गलत है ये कहना अच्छा आता है, मेरा धर्म अच्छा है तेरा अच्छा नहीं ये कहना आता है। पता नहीं हम कहां से सीख गए। ऐसा कौन सा चांडाल आ गया इस देश में जो हमें सिखा गया? किसने सिखा दिया ये हमको? ये बहुत समझना जरूरी है। वो कौन राक्षस है जो हमको सिखा रहा है? अंग्रेज राक्षस रहा होगा, वो तो गए। आज कौन राक्षस है?
हम क्यों सीखना चाहते हैं कि मैं हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, ये सीखने की बहुत अच्छा लगता है हमको। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सीखना बहुत अच्छा लगता है हमको, और फटाफट सीख जाते हैं, बड़ा मजा आता है इसमें। लेकिन जो सीखना चाहिए वो हम नहीं सीखते। हम नहीं सीखना चाहते सब चीजें, हमें बस इसी में बिजी रहने दो, हमें एक दूसरे को मारने में, गाली देने में बिजी रखो, यही हमारी मंजिल है। हम भूल जाते हैं जब दुनिया में आए थे तो हम धर्म का सर्टिफिकेट नहीं लाए थे। अरे हम तो कपड़े भी नहीं लाए थे, कपड़े भी यहां मिले। चलो कपड़ा तो शरीर की रक्षा के लिए मिला, हमें धर्म किस लिए मिला, किसकी रक्षा के लिए मिला, किसके लिए चल रहा? बताइए मुझे, आप सोचिए। धर्म आप कुछ भी मानिए, वो आपका अधिकार है, मानवता का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आपका अधिकार ज्यादा अच्छा है, दूसरे का कम है, यह अधिकार सोचने का आपको किसने दिया? यह भी आपको समझना चाहिए। सबसे ज्यादा लड़ाइयां धर्म के नाम पे होती हैं, जातिवाद के नाम पे होती हैं, क्योंकि हम लोग बेवकूफ हैं। एक आदमी ने आपका दिमाग कंट्रोल किया, मान लीजिए वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट इस काम में है कि आप दोनों को बेवकूफ बना दे और आपका धन लेके भाग जाए। उस बेवकूफ बनाने बनाने में आप अपने धन की चौकीदारी ना कर पाए और वो आदमी लेके भाग जाए। आप ऐसे व्यक्ति को समर्थन देते हैं या उसके विरुद्ध हैं, ये फैसला आपको करना है। एक आदमी बड़े प्यार से बोलता है, बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें करता है और आपको बहुत प्यारा लगता है, और एक आदमी जो आपको डांट लगाता है, आपको कह देता है आपके मुंह पे कि आप गलत हैं, वो आदमी आपको दुश्मन लगता है। लेकिन याद रख लेना, जो आदमी साफ दिल का होता है वो करारा बोलता है, वो मीठी मीठी बातें नहीं करता है। मीठी बात करने वाला हमेशा चोर होता है, राजनीतिक होता है। जो साफ बात करने वाला होता है वो राजनीति का नहीं होता, वो मन की बात साफ करता है, वो आपको साफ कह देता है कि आप गलत हैं। जिसको आप कहते हैं लठ मार आदमी है ये कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो आपका नुकसान नहीं करेगा। और जो मीठा वाला बोलने वाला है, वो होता है एक मुहावरा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। वो राम के नाम पे आपको छुरी मार जाएगा। अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कौन से आदमी को पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप किसको पसंद करें किसको ना करें, मेरा वो पर्सन नहीं है, वो मैं बात नहीं कर रहा आपसे। आपको स्वयं डिसाइड करना है इस देश के बारे में, और वो डिसाइड करना है संविधान को सामने रख के, क्योंकि संविधान आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। जितना भी आप चाहें, संविधान आपसे दूर नहीं किया जा सकता जब तक इस देश में रहेंगे आप। संविधान को तो मानना आपको पड़ेगा, कोई मना नहीं करेगा, कोई कुछ कहेगा नहीं आपसे, कोई आपको फोर्स भी नहीं करेगा आप इसको मानिए। लेकिन जब फंस जाएंगे आप तो आपको इसी के नीचे रह के आगे जाना पड़ेगा। कहने की बातें हैं, हम इसको हटा देंगे। कहने से क्या होता है? कहने से होता क्या है? बड़े बड़े लोग कुछ भी बोल देंगे आपसे, वो यही बोल के तो आगे चलते हैं, उनका तो जॉब है ये बोलना, वो तो इस बात का काम कमाते खाते धंधा है उनका, उनकी फैक्ट्री है ये झूठ बोलना। अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे, आपके हिसाब से आपको खुश नहीं करेंगे, तो आपको वो कैसे खरीदेंगे, आपका वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप तो एक कमोडिटी हैं, आप तो गाजर मूली की तरह हैं जिसको वो खरीद लेंगे और फिर आपको फेंक देंगे। सच तो यही है, सच तो यही है। हमारे जो देश की राजनीति है उसकी फाउंडेशन यही है। झूठ बोलो, किसी का कान कौवा काट के ले गया, कोई किसी को कुछ बहाना मार देता, हम आपको ये दे देंगे, कोई लैपटॉप दे देगा, कोई 15 लाख दे देगा, कोई फ्री मकान दे देगा, कोई आपको भविष्य बना देगा। इन्हीं बेकार की बातों में हम आ जाते हैं और वो हमारी भावनाओं को उबाल देते हैं। हमारी भावनाओं में उबाल आ जाता है और वो हमें खरीद लेते हैं। उनका खरीदना इतना ही है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है कि आपको 5 साल में एक बार उनको मत दे दें और उसके बाद बात खत्म। उनका काम चलता रहता है। ये हमारा संविधान कहता है, मैं नहीं कहता। ये संविधान कहता है कि आप ऐसा करेंगे
तो आप देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हमें चाहिए क्या? इन संस्थानों में जो मैंने बातें की हैं, लेजिस्लेचर विधायिका की, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की और जुडिशरी न्यायालय की, आखिर हमें इन्हें कैसे प्रयोग में लाना है? प्रश्न ये उठता है। अभी तक हो ये रहा है, हमें इन्हें प्रयोग में नहीं ला पाए हैं। हमारी यही एक प्रॉब्लम रही है कि हम इनको ना समझ पाए हैं, ना इनका सही तरह से इस्तेमाल कर पाए हैं। आज हमारी यही समस्या है। 70 साल में जो हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम दुख उठा रहे हैं। हम अगर ये समझ जाते 1950 में, जो हम नहीं समझ सके किसी भी कारण से, हम पढ़े लिखे नहीं थे, या हमें कुछ आता नहीं था, या हम समझे नहीं थे, हम कुछ नहीं समझे थे। कुछ देश के लोगों के जो बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में हथिया ली और आगे चलते रहे, हम पीछे रह गए। इसलिए पढ़ाई लिखाई की वैल्यू मानी जाती है। आखिर हम कहते हैं पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, आगे आ जाइए, बड़े हो जाएंगे। बड़े होने का मतलब बड़ी पोजीशन से नहीं होता है कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। अरे पढ़ ले भैया, बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा आदमी बन जा। कोई बहुत बड़ा नहीं होता, कोई बहुत छोटा नहीं होता। ये अपनी समझ है। पढ़ाई लिखाई आपको क्या सिखाती है आप जानते हैं? पढ़ाई लिखाई आपको सिखाती है, अपना दिमाग का विकास होता है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से आपका दिमाग का विकास होता है। आपका दिमाग वही काम कर सकता है जो आप सीखते हैं सही तरह से, और वही तो पढ़ाई लिखाई है, जिसमें आपकी जिंदगी के 20-25 साल लग जाते हैं। 20 तो लगते ही लगते, ज्यादा नहीं तो। और वो फिर आपको आगे का मार्च, आगे का रास्ता, मंजिल तय करना सिखाता है। और फिर आप अपने उसको वृत्ति मान लेते हैं, अपना व्यवसाय मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचने लग सकते हैं। ये पढ़ाई विद्या आपको सोचने की शक्ति देता है। बहुत कुछ सोच सकते हैं आप उसको, कि आपका माइंड, आपका मस्तिष्क खोल देती है पढ़ाई। और वही देश को बनाती है, सोचने की शक्ति। क्योंकि आप सोचेंगे तो उसी दिशा में तो काम करेंगे, किसी और दिशा में तो नहीं करेंगे। और when you do like that, when you start thinking, when you start contemplation on your studies, what you learned, then you can move further in that direction, in that destiny, which is very important. And if you don't do that, you will not do anything. You will accept orders from others and work. Means you will be a slave of that person who orders you, which is not required now. Now we are about 140 crores, and I think out of 140 crores, more than 50% are having knowledge of education, knowledge of subjects, or even if whatever number they are, it doesn't matter. Education is education, knowledge is knowledge, idea is idea, and action is action. We just learn and forget it. That's not required. If you learn, we apply that. That's required. And we have learned a lot in studies, in education. We have youth, we have middle-aged people, we have seniors who are all educated. And education means further study. Education doesn't mean forget study. Education doesn't mean once you pass, you just throw your books off and enjoy your life. Get job and enjoy life. That's not required. Job is one part of life. That is required because you have to live. You have to meet your daily ends. But what you have to do, that's required. There is no difference between you and a prime minister. Prime minister, by luck, he got that position, and you get not that position. But this doesn't mean you are different in thinking. Both are citizens of this country. That person rose because of his guts or because of malpractice. You can say both. Till now, politics is malpractice. I can say claimly. Till now, our political virtual system, I'm not saying real system, virtual system, practical system, conduct system has been malpractice, abused by those who have power. And who are not having power, they are still in ditch. They are still in ditch. That's fact. Just think how many people are in real politics these days. Can you count them? Can you count them?
About 1,800 are member of parliaments. So you can say in rotation there will be how many for last 14 elections? This means about 14 to 12, 13,000 people. And in competition, you can say there may be double, So only including MLAs, I'm telling you, 6,000 MLAs. How many representatives have India? So you will not find crores in that. No, you will not find crores. You will find few thousands or lakhs maximum. This means your country was abused by this community, invisible and visible community. You may call them dynasty, you may call them relative, you may call them whatever you say. A common man is not available there. A common man who owns this country is not available there. Only these people are available there. Only around a lakh people who are in political system virtually. They are ruling you and me, and they have been ruling us for 70 years, and we are still submitting to them. These are political party. These are political families. They are dynasties. These are all rubbish people who belong to these categories. No public is there. Public is absent from legislature, public is absent from executive, and public is absent from judiciary. This is fact of our constitutional result. And I don't blame constitution, I blame public. I blame citizens of this country who have been sleeping. That is what I always say. Come up, rise, time has gone, it's passing, but we are sleeping. I don't know why we are sleeping. I don't understand that. Why we are so luxurious to sleep? Why have been so lazy? I don't understand that also. I think you also don't understand. That's why you're sleeping. Sleeping doesn't mean sleeping. Actually, it means being ignorant, being careless. You're not looking at problem. Oh, leave it. It will solve. I discuss about problem and people see air is polluted. People say, God will take care of. There's some problem. God will take care of. I don't understand minds of people. God provided you fresh air some time back. It was fresh. You spoil it. How is God involved? God is your servant. You make a mistake and you come back and correct it. It's your responsibility. Same thing applies to us. We ourselves cause every problem in this country. Ourselves cause problem because we ignored our responsibilities. We forgot our obligation. We never cared for our duty and responsibilities. Even after understanding that, we are all selfish. We are all self-oriented. We are all individual-oriented. We think for our families and ourselves. We don't think for nation. But these people who are in opportunity of politics, who have abused us for 70 years, they think a lot against us. They are not sleeping. They all time think, how can I survive in politics again and again, again and again, again and again? And they are lagging. They know we are sleeping and they are enjoying. They are enjoying. And they are successful. No one is failure there. They are all successful. Vote you give, tax you give, contributions you give, positions they get. All positions they get. Right? You try if you can get that position. Never. You will never get. Are you not eligible for that position? You are eligible for the position. But you can never get that. Because practically you have been isolated from power by these people who understand power. They understand how to come to power, while 99.9% people don't understand to come to power. You work hard, you study hard, you do whatever you want, you do everything, but you will not come to power. That is that fact. No need to prove it. No need to prove it. A soldier on border is soldier only, not leaders.
He shall remain soldier forever because these people want him to stay there. That's it. I don't say he should be there. But these people shall not go there to soldier. Their kids will not go to soldiers. Your kids will go there. You will protect these here who are against you. These people work against you for 70 years and your forces are guiding them, guarding them. Virtually speaking, without being king, they are kings. And without being servants, they are servants to them. Constitution is closed. Who bothers about Constitution? Who bothers? Nobody bothers. I have taken oath of secrecy. I have taken oath of office. I have taken oath of everything, and I condemn all oaths after signing my register of oath. And that's it. After that, how much I can get there? How much I can on tender? How much I can on this? How much I can get it? And sale of MPs and sale of MLAs, market of vegetable. Our MPs are vegetable. Our MLAs are vegetable. Our corporates are vegetable or fishes. Fish market. I am selling my position of MP. Come on, how much can you pay me for buying this? This is our politics. Fact of life. If you do not accept this or deny, then you are foolish. Deny it. That is what I want to discuss, relationship between public and legislature. Because legislature is number one. If legislation is zero, executive is zero, and judiciary is zero. No meaning of those. Legislature links to judiciary and legislature links to executive and judiciary link to public, and public is sleeping. Public is sleeping means legislature is not sleeping, but judiciary is sleeping. Public is sleeping means legislature is not sleeping, but executive is sleeping. In your umbrella, there are three, and below that is another layer, and you are holding that umbrella. You are holding umbrella, but umbrella is not working for you. You are holding umbrella. You are not protected from rain. You are not being protected from sun. They are protected. You are not protected. अरे हमारी छतरी का फायदा क्या है जब हमें छाया नहीं मिल रही, हमें धूप से बचावट नहीं मिल रहा, हमको बारिश का पानी लग रहा है, हमारे लोग सो रहे हैं, जुडिशरी सो जाए, एग्जीक्यूटिव सो जाए, लेजिस्लेचर बैठे हैं. ना लेजिस्लेचर की सुनता है कोई, ना लेजिस्लेचर सुनता है किसी की, क्योंकि पब्लिक सो रही है. पब्लिक सो रही है तो न्यायालय भी नहीं जाएगी, पब्लिक सो रही है तो एग्जीक्यूटिव भी नहीं कहेगी, क्योंकि खाली लेजिस्लेचर बैठा है. वो कहता है मैं तो इलेक्टेड हूं, मुझे क्या कह सकते हैं आप, मैं चुनाव करके आया हूं, मैं चुनाव से आया हूं. सही बोलता है, गलत क्या है इसमें? वही आपकी जुडिशरी अपॉइंट करता है, वही आपकी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है. आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कुछ नहीं है. छतरी है, बैठे रो लेके. वो छतरी आपको छाया नहीं देगी, वो छतरी आपको बरसात से रुकावट नहीं देगी, वो उड़ जाएगी. वो तूफान आएगा, उसको उड़ा के ले जाएगा, आपके हाथ में छतरी भी नहीं रहेगी. You want that stage, your umbrella should fly away by just thunder cyclone, and you have nothing left in your hand. That is where you are today. This is analytical result. You are not where. You are not having anything with you in your hands. This means you lose your house, you lose your clothes, you lose your food, and stay naked on road in sun. Do you accept that? आपको ये सब स्वीकृत है कि आप नंगे हो जाएं, आपको पहनने के कपड़े भी ना हो, खाने को रोटी भी ना हो, और आप कड़ी धूप 45 डिग्री 50 डिग्री में बैठे हैं. क्या करूं मैं? शरीर पसीने से पसीना थर हो रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, पसीना गिर रहा है. आप बैठे हैं भीख मांगते हुए, भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा आपको. यह है आज का हमारा हाल देश के लोगों का, तो इन राजनीति वालों ने बना दिया. और हम सो रहे हैं, फिर भी सो रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से. हमारे पैसे में पली पुलिस हमको पीटे, हमारी तनख्वाह पे पलने वाला सरकारी नौकर हमको मारे,
हमारे वोटों से पलने वाले नेता हमको गालियां दें, हमारा अधिकार पूछने वाले नेता हमसे अधिकार पूछ रहे हैं, हमारे अधिकार से बनने वाले, एक गाली नहीं तो क्या है। और हमारा जज कह दे पहले सब शांत हो जाओ, सड़कें छोड़ के घरों में आ जाओ, लड़ो मत, तब हमसे बात करना। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब न्यायालय भी हमारे लिए नहीं रहा। हमारे हक कहता है बंद कर दो, छिन जाओ, चुप हो जाओ, लड़ो मत, तब बात करना मुझसे। अरे हम हैं कौन फिर? हमें तो अपने देश में रिफ्यूजी बना दिया गया है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। हम तो लुट चुके हैं पूरी तरह से। हमने रोका नहीं लूटने वाले को, हम सो रहे थे, वो मार के हमारा सब कुछ ले जाए, हम बैठे रहे, और पुलिस के पास जाएंगे तो कहेंगे आप सो क्यों रहे थे, और पुलिस भी आप पे लांछन लगा देगी। चोरी मेरा हो गया, घर मेरा लुट गया, सब कुछ मेरा लुट जाए, ना मेरी पुलिस है, ना मेरा न्यायालय है, ना मेरी कोई है, तो मैं कहां जाऊंगा? इसका क्या आंसर है आपके पास? तो ये सो क्यों रहे थे? सही बात है, हम सो रहे थे, हमारी गलती थी, हम उठे नहीं, और जब उठे तो आंख खुली, कुछ था नहीं, सब लुट गया था। अरे सब लुट गया था, क्या करें आप? सोचिए, आप लड़ते रहिए, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहिए, आपका भाग्य में लड़ना ही है, लड़िए। जब घर के 4 मेंबर होते हैं और लड़ने लगते हैं ना, तो कोई दूसरा इसका फायदा उठाता है। पड़ोसी सुनते हैं आपकी सीक्रेसी चली जाती है, सड़क वाले सुनते हैं ड्रामा हो जाता है, पब्लिक के आप सीन बन जाते हैं, मनोरंजन बन जाते हैं फ्री में। उसको 300 रुपए खर्चने की जरूरत नहीं फिल्म जाने के लिए, सामने मनोरंजन चल रहा है, सब लड़ो। जिससे आपको लड़ना चाहिए उससे आप लड़ेंगे नहीं, आपस में लड़ेंगे। और यही है सीक्रेसी राजनीति की। लड़वाइए इनको, लड़ी तो रही है। जेब में पैसे नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, अंधकार सामने है, और लड़िए। अंधेरे में पहले कौन जाएगा? नहीं, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ। अरे मतलब क्या रह गया? कौन है हम? कुत्ते हैं क्या हम? कुत्ता भागता है गाड़ी के पीछे, गाड़ी चली जाती है, उसे पता नहीं होता कि मैं क्यों भाग रहा हूं। आपस में लड़ते हैं कुत्ते, एक दूसरा एरिया का आ जाए तो वो लड़ता है। हम उनसे भी गए गुजरे हुए हैं। चलो, उनके पास तो कपड़े की जरूरत नहीं, पहनते नहीं वो, उन्हें तो सिर्फ रोटी खानी है, लेकिन वो फिर भी समझता है मेरा राज है, और वही हाल हमारा है। हम ये समझ के बैठे हमारा राज है, हमें समझ के बैठे, हमने वोट दिया, हमारा राज है। वोट देने से राज नहीं होता, वोट तो ले लिया जाता है, और लेते रहे हैं वो। 14 इलेक्शन में आपसे वोट ले चुके हैं वो, और आगे भी लेते रहेंगे, और आप देते रहेंगे, क्योंकि आपका रिश्ता ऐसा बना दिया गया है। आपका रिश्ता सिर्फ वोट तक तय कर दिया गया है। आपका काम एक ही है, जैसे मर्जी होगा हम आपसे वोट ले लेंगे, और आप वोट दे देंगे, और हमारी गाड़ी चलती रहेगी। हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आपसे विनती है कि आप भी हमसे कुछ नहीं मांगना। ये देश ऐसे ही चलेगा, हम आपके सर पे बैठे रहेंगे, हम अपनी हट चलाएंगे, हम किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, हम अपने हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, और आपको उल्लू बनाएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे, और आप बनते रहेंगे, खुशी खुशी से बनते रहेंगे। हम आपको कहेंगे आप जन गण गाइए, आप गाएंगे। हम आपको कहेंगे भारत माता की जय कहिए, आप कहेंगे। हम आपको कहेंगे वंदे मातरम कहिए, आप कहेंगे। हम आपको गालियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप फिर भी हमें वोट देंगे। यही हमारा इंसाफ है, यही हमारा फार्मूला है आपको जीतने के लिए। और आप हारते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे। यही आज की राजनीति है, लेकिन हमको इसको बदलना है। ये हमारा भी ख्याल है, ये हमारा भी फैसला है। हम बदल के दिखाएंगे, यह हमको देखना है। हमको गुलाम कब तक समझा है आपने? हम गुलाम हैं आपके क्या? यही सोचना है। पढ़ाई लिखाई अगर हमें इतना नहीं सिखा सकती तो कॉलेज जाना छोड़ दो। अगर आप इतना भी नहीं सीख सकते, आपको देश अगर पढ़ाई लिखाई फ्री नहीं देख सकता तो वो देश ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई खरीदी नहीं जा सकती है, हम टैक्स देते हैं, हमारा हक हमको चाहिए। आप पढ़ा नहीं सकते हमको। खुद आप सारी दुनिया में घूमें, हरामखोरी करें हमारे पैसे पे, हम पढ़ नहीं सकते। आप पैसा बर्बाद करें देश का, हम पढ़ नहीं सकते।
अरे मैं सामने एग्जाम्पल हूं, फ्री में पढ़ा हूं, करीब करीब फ्री होता था उस जमाने में जब हम पढ़ते थे। चंदा दिया जाता था, बहुत मामूली चंदा, 30 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपया। हमें वो स्टेज चाहिए पढ़ाई की। चंदा लीजिए आप हमसे, धंधा मत लीजिए, और आप नहीं पढ़ने देंगे तो हम आपसे जबरदस्ती पैसा लेंगे, और नहीं तो आप सीट पे नहीं बैठने देंगे। हमें वो विश्वास चाहिए अपने अंदर। एहसान कर नहीं रहा कोई हम पे, ये हमारा पैसा है, हमारा देश है, हम देश के पैसे हैं, हम देते हैं देश को पैसा, आप नहीं देते, आप तो लूटते हैं हमारा पैसा, और आप धौंस दिखा रहे हैं हमको। आपने किया क्या है अब तक जो धौंस दिखा रहे हैं? शिक्षा हमारा हक है, स्वास्थ्य हमारा हक है, तरक्की करना हमारा हक है, सुरक्षा हमारा हक है। कोई शक्ति छीन नहीं सकती जब तक ये देश जिंदा रहेगा। नहीं तो ये देश जिंदा नहीं रहेगा, ये गुलाम बन जाएगा या टूट जाएगा। बहुत गंभीर विषय है ये आज के तारीख में 2020 में। ये बहुत गंभीर विषय है। लोग सड़कों पे होना जरूरी नहीं कि इंसाफ कर देगा। सड़कों पे होना तो एक गुस्से को एक्सप्लेन करना होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, लेकिन जो दिमागों में गुस्सा है, इन लोगों के खिलाफ जो हम पे राज करते आए हैं, कोई भी क्यों ना हो, सबको मैं कह रहा हूं, ये गुस्सा पब्लिक का आप सह नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको संविधान को समझना पड़ेगा, और आप संविधान नहीं समझे तो आपको ये लूटते जाएंगे, और आप लूटते रहेंगे, हमेशा लूटते रहेंगे। We have to understand this basic fact that education is a must and must, which they don't want you to learn. These political leaders are not educated themselves, and that's why they do not want their competitors. They want to keep your minds closed so that your minds cannot think, and that is their capability. If you do not think, they think against you, and if you think, they cannot think against you, because when you think, you speak, you calculate problems and speak and raise questions to them which they cannot answer. That is where problem lies. They want to close your minds, they want to close your mouth, they expect you not to speak, and if you speak, they beat you directly or through police. That state has come because our children are speaking. Our citizens have started speaking. Though they have not gone through constitution fully, yet they speak by common sense. And that common sense is that you open your minds, forget these leaders, open your minds and open your eyes to see facts of life, which is very important. If you cannot do that, then you are animal, nothing else. You want to prove you're animal, or you want to prove that you're mind. There are two things now. One side is animal, which is human, and one side is mind, that is power. Mind seeks something, demands something, and these people run away when you ask something. They run away from responsibility and they send police to you to beat you. Because you are asking mind, you are raising mind. They don't want you to raise mind, and that's why you break your heads, so that your mind stops. They break your legs, they break your heads, they break your arms, or they shoot you because you are speaking mind. If you beg, they are happy. You go and say, Sarkar, give me this. My Bap, give me this. They are happy. I am government, I am king. He's begging. Do you want to beg? It's your option. Or do you want to demand? It's option. Or do you want to catch hold of these leaders and throw them? That's your decision. Constitution is very clear. Relation to constitution, legislature and public is very clear. Public is above legislature because public made legislature. Public zoomed out legislature. Public gypped legislature. Public is sitting outside parliament and servants are sitting inside parliament. Just imagine that situation. We are sitting outside parliament. 140 crore people. Imagine that.
and 550 plus 250 servants are sitting inside parliament to serve you. You have to check what they are doing. If you cannot check that, they are liberal, they are free, they know there is no controller. You have to control them. Only then they will listen to you, or they are looters. Your money they will loot. Which way you want, you have to decide. You are actual legislative body, not they. They are representative legislature. You are real legislature. There are two things now. Relations between legislature and public, or legislature and real legislature. Public is real legislature. These are only formal legislature assisting your legislature. They cannot oppose you if you watch them, if you control them. They have to work for you in capacity as representative legislature. Now it is we have to decide, you want representative legislature or you want free legislature. This is very important point I am making, because if legislature is strong, if legislature is powerful, then everybody shall work according to constitution. Your constitution may be this one or maybe other one in future, I don't know. It's in your hands. This constitution is powerful only if you understand this, if you know what it is. And if you do not know, then it's not powerful. It is weightless, it is qualityless, it is baseless, and just a scrap. But it is very powerful, it is very qualitative, it's so strong that no one can touch it if you control this, if surveillance over this. You talk in line to this constitution, you conduct in line to this constitution, then these robbers shall run away. Now it's up to you to think and decide what do you want. Privilege is yours, charter is yours. These are your servants. Keep in mind, not your leaders. You are leaders as public. They will hate you when you are on road or when you demonstrate or you control them. They shall certainly hate you. They will call you anti-nationals. They will call you bad elements. They will call you are being misguided. They shall call everything. Don't worry about that. Let them bark. No problem. Dogs bark. Don't worry about that. But my constitution has to stay there. I have to understand that real reality in full scale, then everybody will set right. If a legislature is efficient, qualitative, honest, executive shall also be honest, and judiciary shall be further honest. You want that state to achieve, for that you have to struggle. You have to keep your hands on legislature, because they are not constitutionally free. Constitution binds them. Remember, legislature is not free. First of all, there is constitution and then there is public. This is a triangular body: parliament, constitution, and public. This is a triangle of legislature which you cannot omit. This exists there. Somebody says something has been done according to parliamentary practice. No. Parliament practice doesn't mean legislative practice. It means public is involved. And constitution has to order them. They have to work for constitutional requirement. That is what it is. Because ultimately,
legislature is applied onto people and people have to accept that. Don't forget, Constitution itself was devised by people of this country, designed by this country people, adopted by this country people, and delivered to by this country people to themselves by themselves. So preamble says this is people of this country who are responsible for this constitution, not legislature, not executive, and not judiciary. This triangular method, triangular design must be understood in this hierarchy. You have to control constitutional legislature first. You have to sit on their heads and force them to work according to requirement, or throw them out legally from parliament. Bring others. That's the answer. And if you cannot do that, then you fail entirely. You cannot do anything in your life except just submit to them, and that's not democracy then. That's not constitutional rule. That is slavery. If you want to get slavery, get slavery. आपको गुलाम बनना है, गुलाम बनिए. आपको मालिक बनना है, मालिक बनिए. आपको देश चलाना है, देश चलाइए. आपको लेजिस्लेचर नहीं कंट्रोल करना, आपकी मर्जी. और अगर देश को सही करना है तो लेजिस्लेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, जबरदस्ती कंट्रोल करना पड़ेगा. सड़क पे बैठने से नहीं, दिमाग से करना पड़ेगा, एक होके करना पड़ेगा. जोश में आके नहीं, होश में आके बात करनी होगी. जोश में बात करने से कोई फायदा नहीं है. डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जबरदस्त फैसला होना चाहिए कि हमको ये करना है. सड़क पे आइए, लेकिन दिमाग से, शोर से नहीं, हल्ले गुल्ले से कुछ नहीं होने वाला. कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं जिन्होंने हमें 70 साल गुलाम बनाया. मैं तो उसे गुलामी ही कहूंगा. अगर मैं या आप एक कॉमन, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आप पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकते तो ये गुलामी ही है. आप पार्लियामेंट नहीं जा सकते क्योंकि आप तो किसी राजनीतिक दल के साथी नहीं हैं. आपको टिकट ही नहीं मिलेगा, और टिकट मिल भी जाएगा तो आप चुनाव में पैसा नहीं है आपके पास, तो आप कैसे पहुंचेंगे? जबकि संविधान आपको हक देता है. तो हक वो किस काम का है जो मुझे मिल नहीं सकता, जिसको मैं ले नहीं सकता? तो हक मेरे किस काम का है? ये प्रश्न उठना चाहिए. कभी नहीं उठता. बस वोट दे दो, बात खत्म. एक मन में ऐसी बना दिया गया है, एक चैप्टर ऐसा मन में डाल दिया गया है, हमारे माइंड्स में डाल दिया गया है कि यार मैं तो वहां पहुंच ही नहीं सकता, मेरा कोई सोर्स नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं लोकसभा पहुंच जाऊं. और यही हम हार गए. सच कहा जाए तो संविधान यही हार गया. संविधान में सब कुछ है, लेकिन वो सब नहीं है आपका, वो इनका है. जो चुनाव जीत के जाता है वो राजा समझ लगता है अपने आप को. चुनाव आप देते हैं, उनको वोट में जिताते आप हैं, लेकिन मालिक वो बन जाता है, आप कुछ नहीं होते उसके. यही रह गया संविधान. बाकी खराब कर दिया हमने, क्योंकि हम समझते नहीं है. संविधान बहुत कुछ कहता है, जो लिखा हुआ है वो भी कहता है, और जो नहीं लिखा हुआ है वो भी कहता है. लेकिन ना हम लिखे हुए को समझते हैं, ना आप जो नहीं लिखा हुआ है उसको समझते हैं, क्योंकि हम समझते ही तो नहीं है. जो जज अपने हिसाब से समझ लेता है वो वैसा ही फैसला दे देता है उसकी समझ से. जितना वो सोच सकता है जज, उतना सोच सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, लर्नेड है, हमसे कहीं ज्यादा सोच सकता है संविधान के बारे में. लेकिन वो भी सब कुछ जवाब नहीं देता जो मिलने चाहिए जवाब. वो भी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो भी नियुक्ति सरकारों के हाथ में है. जजों की नियुक्ति भी सरकारों के हाथ में है. वो भी फ्री नहीं है. मिनिस्टर भी सरकार के हाथ में है, और जो आपके हाथ में होने चाहिए वो भी सरकार के हाथ में है. अफसोस से इस बात का होता है. आप वोट देते हैं, उछल उछल के देते हैं, भाग भाग के देते हैं, खुश होके देते हैं, शोर मचा के देते हैं, लड़ाइयां करके देते हैं, खून कर भी देते थे लोग, खून भी हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं वोट के लिए. पर उसका मतलब आप नहीं समझे, आज तक मैं नहीं समझा.
स्लोगान होते हैं सबको वोट देना चाहिए, होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, अधिकार मत का होना चाहिए, पर उसका मतलब कोई नहीं बताता, ना कोई बता सकता है, ना कोई पूछने की हैसियत रखता है। आप पब्लिक से पूछेंगे, हाँ जी सरकार बनानी है, जवाब ये मिलेगा। आप किसी जर्नलिस्ट से पूछेंगे, जाएगा पूछे रास्ते में किसी से, हाँ जी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्वेश्चन ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ना पूछने वाले को पता है संविधान क्या है, ना उत्तर देने वाले को पता है संविधान क्या है, लेकिन प्रश्न यही पूछेंगे क्योंकि उनकी सोच यही है, उनका एक्सपीरियंस यही है। एक्सपीरियंस ने संविधान की ताकत को, संविधान की शक्ति को दबा दिया, क्रश कर दिया, चकनाचूर कर दिया, और हम भी उसको मानने लग गए। उस कचरे को, उस पेपर के चूरे को हम मानने लगे कि यही सही है, क्योंकि हमने संविधान पढ़ा नहीं था। पढ़ना हम चाहते थे, हमें पढ़ने भी नहीं दिया गया, क्योंकि अपनी शिक्षा में अब इतने बिजी थे, हमारे सब्जेक्टों की पूरी नहीं होती थी पढ़ाई, तो हम संविधान क्या पढ़ेंगे। और अब भी शिक्षा के बाद भी हम नहीं पढ़ना चाहते, बहस हम करेंगे। हर जगह बहस करते हैं लोग, टेलीविजन चैनल पे चले जाओ, लोकसभा में चले जाओ, स्टेट असेंबली में चले जाओ, या सड़क पे चले जाओ, बहस सब जगह है। लेकिन बहस का कोई मतलब नहीं होता, बिना मतलब की बहस, बिना बात की बहस, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि आप जड़ नहीं जानते कि जड़ कहां पे है। जड़ नहीं समझेंगे तो आप सही तरह से पेड़ नहीं उगा सकते। वो जड़ जो चाहती है आप उसको वो दे नहीं रहे, तो आपको फल सही नहीं मिलेगा। It is our failure actually. We don't understand what our constitution is. We just keep arguing for sake of argument without understanding what you are arguing about. You go to parliament, Lok Sabha, you go to assemblies, you go to on road, you go to wherever you want to go, you will not find right answer. Journalists are there who have never read constitution, politicians are there who have never read constitutions, public is there who never read. We had never time now studies to just see what constitution and understand that, we have, because we don't have time for our studies, which are the syllabus studies. We could not understand. After passing this also, we never try to study what is constitution. You may say, why I am stressing on constitution? You have to stress on constitution because this is related to your future and present and coming generations' future and present. That's very important. We never know what is there, but we argue, because we have been fooled for 70 years, and 70 years foolishness means a kind of virtually slavery. We have been slaves to people in politics, and we think that is right, not otherwise. But that is wrong, otherwise is right. Why I am stressing this? Because this is an only solution for your problem solving. Otherwise, you can never solve your problems. If you think one man as prime minister can solve your problems, then you are in fool's paradise. Because this country is not owned by prime minister. Prime minister cannot understand even your problems. How can you solve that? They think only for themselves. This is our manifesto. They threat you. Prime minister threatens you. This is manifesto. No, I am not slave to your manifesto. You may publish that in the election. Doesn't mean that I have to accept it. My vote doesn't mean that I accepted that. That is your manifesto. It's for you. My manifesto is my constitution. That is permanent manifesto, which you have to comply with. Your manifesto is going to, you can say it goes to kachra. I don't care for your manifesto. I care for my constitution, which is for me as well as for you. If you don't respect that, I don't respect you. So simple. Permanent manifesto is constitution, which is explanatory document, policy document, which is permanent for this nation. And if we do not respect that, this means we do not respect people of this country.
You can be prime minister. There can be many prime ministers in so many years. No meaning. That is what Constitution says. This is what Constitution demands. You read it. You don't know your meaning of vote. That's the problem. You think it's a procedure. Now why you vote? It's a procedure only. You want to be a part of procedure or you want to achieve something. What is meaning? I accept my vote if it is valuable. If my vote has got no value, what's the purpose of voting? One side, one type you say, every vote has got meaning. Every vote is powerful. Every vote. Yes, every vote is powerful. But what type of power it is having? If my vote doesn't give me something, to an extent problem is solved or not solved, then why should I vote? But Constitution says you have to vote. I agree. I respect that. But are we complying with that? This is a question for everybody. This is a question to everybody in this country. That you are voting for whom? You would say, I vote for BJP, I vote for Congress, or I vote for Modi, or I vote for XYZ. This is your answer. If somebody asks whose government shall be forming, somebody says Modi government, somebody says Congress government, somebody says this and somebody says, is that answer? That is what is not required by Constitution. That's what I'm saying, read it. You are responsible for all problems, not Prime Minister, remember, not Constitution. People say, oh, Constitution rubbish, throw it. Constitution not rubbish. Your mind is rubbish. Because you never said that, I want to read Constitution. You have no will to read your Constitution and understand that. And then you're saying it is rubbish. Did you say physics is rubbish? Did you say chemistry is rubbish? Did you say commerce is rubbish? You never said that. Because you studied that subject. You studied maths, physics, chemistry, drawings, arts, chartered accountancy, law. You never said that those are rubbish. If you talk to a lawyer, advocate, that guy would never say Constitution is rubbish. If you talk to a judge, that would not say this is rubbish. Only you are saying. Because you have been taught like that. There's nothing in Constitution. There's no Constitution. It's useless. It's this and that. Because is scaring Constitution for those who do not respect this. This Constitution threatens them. Be careful, I'll beat you. That's what Constitution says. The Constitution cannot beat in a sense of soul power. It says, I'll teach you a lesson, listen to me. That's why they run our Constitution. And solution this politician found is something else to help themselves. What they found, they created a picture in citizens' mind, and that picture is you have to vote for government. This is a Hawks picture, a Hawks solution, unrealistic solution. You have to form a government. You have to form a prime minister, or you have to form a chief minister. A fictitious picture has been given to you, and unfortunately you accepted that. Oh, we have to form a government. If there is no government, how a nation shall work? Does Constitution say that? Have you ever gone through that? Does it speak somewhere that you have to constitute government? Go through that and tell me. Then you will cross-question me, then what we should do if you don't form a government. Why are you worried about something which is not your job? A doctor who is a surgeon of heart, can he be successfully work on neurology? Can you? You are not surgeon of something, you want to do surgery on that. Constitution never orders you
It never asks you to vote for government or prime minister. But all time you do that. Because either you did not read it, or you don't understand it, or you don't care for this. You are very serious whose government should be there. You are not serious who should make that government. You are thinking you are making that government. And this is what these coalitions like you to do that. Because if they ask you, this should be prime minister, then you are only one thing. Oh, this man should be prime minister, or that man should be prime minister, or this man should be chief minister, or that man should be chief minister. And your work is reduced to one point. Whereas you have in Lok Sabha 550 points and varying points in all states, you ignore that. You just think of one person. Here lies problem. This is poison that you have drunk so far. This is poison itself that you have been drinking every time my election comes. I have to elect this man as PM. Really, this is poison, and you are drinking it. And they're happy that you are drinking it. You are not thinking of those people who are sitting there for this job. You have removed that responsibility for those people, from those people who actually are required to elect their prime minister. You have eroded their responsibility, and that is your mistake. There are 550 minds sitting there, which actually whom you elected, but you forgot them. You never elect them. You elect only one person who is not your representative, but you force yourself to elect that, and there's a problem. This is a problem which you have to solve, because you are spending your money on those 550 people who are coming to be elected and who are elected, but you are not caring about them. You are caring about a person who is not required to be elected by you, and you are electing that person. And that is where dictatorships evolved with. That is where Indira Gandhi became dictator. There was a Modi is dictator, and this is root to dictatorship. You are concentrating your power to one man, and that man thinks means you reverted system rather than evolving system. You reverted whole picture. Power of 550 MPs have been taken by you off and given to one man. And those 550 people have become slaves to one man, which is not required. They are different identity. They are legislature. Prime Minister is not legislature. Try to understand this difference. Prime Minister is to report to these people, but now what is happening? Prime Minister is not reporting to them. Prime Minister is being reported by these people. This is reverse. Your representatives have become slaves to Prime Minister, and you have made them slaves by your mistake, not by their mistake. Result is you don't know about them, they don't know about you. We neither know them, they don't know us. But we are spending money on them. And if you think you have to elect PM, then better amend Constitution. Don't waste money on these 550 people. Why? You are spending a lot of money on them. They are nothing but robots. These 550 MPs in Lok Sabha are nothing, just effigies, just robots. Those who are from political party of Prime Minister, they say yes to him. And those who are from opposition parties, they yes to their leaders. Nobody cares for you. Nobody comes to you, because this is poison you're drunk. This is mistake you're causing everywhere. Same thing applies to states also. This is analytical. This is analytical work you have to think. Why do you think you should concentrate on Prime Minister after all? When Constitution directs you something else, you are not complying with your Constitution, and problem arises. Constitution has given a solution. You are least bothered about that. जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं. आप उसको चुन रहे हैं जो आपका काम नहीं है.
जिससे आपका लेना देना नहीं है, उसको आप चुन रहे हैं, बिना बात चुन रहे हैं उसको आप, उसके लिए मरे जा रहे हैं आप, लड़े जा रहे हैं आप, आपका कोई रिश्ता नहीं है उससे। लेकिन जिससे आपको रिश्ता है उसको आपने फेंक दिया, मार दिया, पहले ही पैदा होने से पहले ही मार दिया, पर वोट आप दे रहे हैं, वोट आप उसी को दे रहे हैं, वोट आप उसी को जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं जा रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को जा रहा है। सोचते आप हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हैं, लेकिन आप चुन नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर को, आप उनको चुन रहे हैं जो वहां बैठे हैं, जिनकी आप वैल्यू नहीं कर रहे। जब आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? वो भी जानते हैं हमें तो उसके नाम पे वोट मिला, ठीक है, वो नहीं कि जूते पॉलिश करेंगे कि आप क्या करेंगे, किसके करेंगे, वो चमचगिरी किससे करेंगे? वो आपको अपनी चमचगिरी करानी आती नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उससे। आपके एमपी आपके पास आने चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के पास आने चाहिए, बताइए आप। आपने किसको वोट दिया? आप सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर को दिया, लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दिया, आपने तो एमपी को दिया। वो भी जानता है दिया, लेकिन वो मानता नहीं है, क्योंकि उसने प्राइम मिनिस्टर के थ्रू आपसे वोट लिया। यही तो गड़बड़ की जड़ है। एमपी आपका नहीं, लेकिन कानून से आपका है, संविधान के हिसाब से वो आपका है, लेकिन आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। यही तो रिश्ता रह गया। हमारा जिम्मेदारी एमपी की है, पर एमपी हमारा नहीं, हम उसको जानते नहीं, वो हमारा नहीं, तो भाई कैसे चलेगा? वो जिसका है, जिससे उसको वोट मिलेगा, वो तो उसी की बात करेगा ना, आपकी क्यों करेगा? यही खोलना है इस दिमाग में। जिसका पैसा आप दे रहे हैं अपने घर के अंदर, किसको रखा है आपने एम्प्लॉय, किसी मेड को, किसी सर्वेंट को, किसी केयर टेकर को, जिसको भी आपने घर में रखा है पैसा देके, वो काम करेगा आपके लिए, सड़क वाले के लिए? किसके लिए काम करेगा? वो आपके लिए करेगा या सड़क के चलते आदमी के लिए करेगा? लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। आप उसको पैसा भी दे रहे हैं, उसको रेम्यूनरेशन भी दे रहे हैं, उसको मकान भी दे रहे हैं, गार्ड भी ले, लेकिन वो आपका नहीं। तो आपके वोट किस काम आ रहे हैं? किसी काम नहीं आ रहे हैं आपका वोट। एक गफलत में आप वोट दे रहे हैं, एक ख्यालों में वोट दे रहे हैं आप। ना आपका एमपी है आपका, ना आपका पीएम है आपका, ना लोकसभा है आपकी, आपको बेवकूफ बनाया गया है, आप बन रहे हैं। आप जिस दिन इतनी सी बात समझ जाएंगे, इस देश का बेड़ा चल जाएगा, इस देश सही हो जाएगा। क्योंकि ये लोग अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, वो सही होगा, क्योंकि इनसे डरेगा वो। इन 550 आदमियों द्वारा जो भी चुना जाएगा, वो डर के रहेगा कि हाँ, ये मुझे उठा के फेंक सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। गुलाम बन गए एमपी, और आपने बनाया गुलाम, क्योंकि आप समझते नहीं। यही एमपी आपके हैं, यही सही कर सकते हैं देश को, याद रख लेना। कोई और सही नहीं कर सकता। इनको जिस दिन पता लगेगा कि मेरी पब्लिक मेरे सामने बात कर रही है, मेरे गिरवान तक पहुंच गई है, ये अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। ये तो पैसे देके जीतते हैं, पैसे देके टिकट लेते हैं, और फिर पैसे देके ये जीत के आते हैं। इनको तो बिजनेस करना है। 50-50, 100-100 करोड़ जो खर्च के आएगा, तो वो आपकी सेवा कभी नहीं कर सकता, भूल जाइए। एक डॉक्टर 1-2 करोड़ खर्च के डिग्री लेके आता है, वो फिर कमाता है। तो ये तो 50-50 करोड़ खर्च के आ रहे हैं, ये कमाएंगे नहीं क्या? आप कौन सी दुनिया में हो? आप रहिए गरीब, रहिए मजदूर, रहिए खेत मजदूर, कुछ भी करिए, मरिए, आत्महत्या कीजिए, इनकी सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ऐसे ही करेंगे। ये देश के असली दुश्मन है, आपके बनाए हुए। तो आप अपने दुश्मन हैं, क्योंकि आपने इनको देश का दुश्मन बनाया है, तो सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये बात जिस दिन आपके समझ आ गई, इस देश का उद्धार हो जाएगा, इस देश का उद्धार हो जाएगा। जिस दिन आपके ये बात समझ आ गई कि हमको क्वालिटी वाला एमपी चाहिए, जो हमारे लिए काम करे, हमारे से बात करे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, उस दिन सही में स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी। सही स्वतंत्रता उस दिन मिलेगी आपको। अभी आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप गुलाम हैं। जिस दिन वोट का मतलब आपको समझ आ गया सही तरह से, तो कितने आएंगे प्राइम मिनिस्टर, कितने जाएंगे, कोई मतलब नहीं। जो आप हैं वो होगा, जो आप चाहेंगे वो होगा। सीए की तो ऐसी की तैसी, एनआरसी की ऐसी की तैसी, जो आप चाहेंगे वो होगा। इनकी क्या औकात है? लेजिस्लेचर आप हैं, ये नहीं। बड़ी लोकसभा आप हैं, वो छोटी लोकसभा जो पार्लियामेंट में बैठी है। सबसे बड़ी लोकसभा देश की जनता होती है। इस बात को समझ लीजिए आप। ये तो चाहते हैं आप सड़क पे आएंगे, बाप का क्या जाता है। ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा, वो भी ऐसे ही करेगा। आपकी सेवा कोई नहीं करेगा जब तक आप अपने वोट की सेवा नहीं समझेंगे।
वोट ऐसे नहीं दिया जाता, वोट के लिए बहुत सोचना पड़ता है। जब तक एमपी और एमएलए आप सही नहीं चुनेंगे, ये देश सही नहीं हो सकता, याद रख लेना। संविधान में कोई गलती नहीं है, गलती आपकी सोच में है, आपकी प्रैक्टिस में है, आपने संविधान को सही समझा नहीं है। जिस तरह लोग बिल्डिंग का नक्शा तो बनवा लेते हैं, बिल्डिंग वैसी नहीं बनवाते, क्वालिटी बिल्डिंग में नहीं आती है, नक्शा जरूर होता है, कोई फायदा नहीं होता उसका। आपका नक्शा आपका संविधान है, बहुत बड़ा नक्शा है, पर आपने समझा नहीं है, प्रॉब्लम यही है। इसलिए समझेंगे तो सही रहेंगे, नहीं समझेंगे तो रोते रहिए जिंदगी भर, आपका देश ऐसे ही रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप भूल जाइए, वोट देते रहिए और सोते रहिए। If you can understand my little message to you is that think of this country and think of your vote, think of constitution. This government is not yours because you never elected government. This government is by practice, by malpractice, by marketing. Your government is these leaders, your representatives whom you do not know. You elect them right way or you come your way. You get elected. Who stops? You have a requirement to elect quality MPs and quality MLAs if you want to see power of this constitution. And if you cannot do that, then forget. Then better Modi, Rahul, Modi, Congress, BJP. Just think that way. And this result is Bhakts are the foolish Bhakts. I have sympathy with them because they have no other thing except to speak like that. They have no answer. Like Modi has no answer. You ask a question, Modi cannot answer. My challenge to you, you ask any question, you ask certain question, Modi can never answer because he does not know answer. He has no solution of problems, but you have. You have. Understand your vote. Constitute MP and not PM. That's only answer. You have to try it once and see result. You have to. When this MP thinks you are there, really, they will shiver. There are people to ask me. Certainly they will be yours because they have to survive. Now they know there's no one to question. There's no one to question. If you want to give them a responsibility, give them. Don't give to Prime Minister. It is MP who is legislature, not Prime Minister. Keep in mind, if you want to improve this nation, elect your MP, not Prime Minister, not Chief Minister. This is my final message. If you understand this or you don't understand this, आप समझे ना समझे आपकी मर्जी, जबरदस्ती मैं नहीं कर सकता, पर बार बार मैं ये कहूंगा, बार बार कहूंगा, आगे भी कहूंगा, क्योंकि आप लोग एक बात कहने से समझते नहीं, एक बार कहने से आपकी समझ नहीं आता। जैसे बार बार टीचर समझाता है, समझाता रहता है, फिर स्टूडेंट भूल जाता है, फिर पूछता है, फिर भूल जाता है, इसलिए कहता है अच्छा पढ़ के सुनाइए आप। एक वही स्टेज है देश की कि आपको संविधान को पढ़ के सुनाना पड़ेगा, अरे समझ नहीं आता आपकी, यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप ये समझ जाते तो देश आपका कब का सुधर गया होता। अमेरिका के राष्ट्रपति की टांग खींची जा रही है, आप जानते हैं, यहाँ के खींच के दिखा दीजिए ना आप। अरे एमपी आपसे बात नहीं करना चाहता, एमएलए आपसे बात नहीं कर, वो जानता है इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, बेवकूफ लोग हैं ये, वो जानता है कि आप बेवकूफ हैं। खैर छोड़िए, अब मैं बुरा नहीं कहना चाहता, अब मैं बात खत्म करना चाहता हूँ इस वीडियो की। मेरी आपसे यही है कि प्लीज थोड़ा सोचिए, माइंड लगाइए। ये प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन पहले सुधार करना है। हमने जब तक गलत किया उसको सुधारना है। वी हैव टू इंप्रूव व्हाटएवर डन सो रॉन्ग सो फार, वी हैव टू इंप्रूव दैट। एंड विद दिस जय भारत, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।